Namaskar, greetings from the vibrant whole community. We are here to celebrate Bharat Gyan Samagam 2024. We are all ready to welcome the various intellectuals gathered from all over the country. We understand the requirement of upgrading education system. We are here in COER with the knowledge bank, and we want to add on the experience and knowledge of all those who are gathered today. The real education is not just limited to the knowledge of textbook. We got to understand the theory and its application in the real world. I'm sure all those who are gathered today to celebrate this great day would contribute their views and add value to the entire community. Thank you so much. As we delve into the heart of the conclave, our chosen theme, Bharat Gyan Samagam, signifies more than a mere convergence of knowledge. It embodies the spirit of unity in diversity, bringing together educators from various backgrounds, regions, and perspectives. This conclave transcends being just an event. It is a celebration of the collective wisdom that propels a nation forward. Throughout the conclave, participants will engage in thought-provoking workshops, panel discussions, and collaborative sessions with the aim to redefine the contours of education for the 21st century. Together, our vision is to redefine education that transcends boundaries and transforms lives. Bharat Gyan Samagam 2024 is a journey towards collaboration and enlightenment. Good morning and welcome to the serene campus of this beautiful temple of learning. I extend my gratitude to the vibrant COER community, our distinguished speakers, and each participant for making this conclave a platform for meaningful discourse and knowledge sharing. Let's make the most of this opportunity to collectively shape the narrative of education in India. Thank you and Jai Hind. This conclave is not just an event, it's a dynamic platform for collaboration. Connect with like-minded individuals, share experiences, and contribute to the collective wisdom that propels education forward. Under the visionary leadership of our esteemed management, COER University stands as a citadel of learning, innovation, and inclusivity. This conclave is a testament to our commitment to fostering a dynamic educational ecosystem that transcends boundaries. Months of preparation have led us to this moment where educators, leaders, and visionaries come together to chart the course for the future of higher education in India. Bharat Gyan Samagam is a celebration of ideas, a fusion of culture, and a commitment to shape the educational framework that is inclusive, innovative, and influential. Thank you, Team COER University, for curating this very informative video. Now it's time to hear a beautiful song of COER University. It's called the Kulgeet. This song depicts the heritage of COER University, its values and ethos on which it stands. To present the song, I would request Dr. Deepak Raturi ji to come onto the stage. Please welcome Dr. Deepak Raturi ji.
हेलो। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानंद माधवः। सलिले हंसः हंसे कमलं कमले तिष्ठति सरस्वती हस्ते माला करे पुस्तकं करयुगले वीणा वसति। हंस विवेकं वाञ्छामः कमल विमलितम् इच्छामः माला पुस्तक वीणा भी तमसो ज्योतिर्गच्छामः। सर्वेभ्यः नमो नमः। सभागार में उपस्थित देवभूमि उत्तराखंड के पतित पावनी माँ गंगा मैया के तट पर आधुनिक ज्ञान विज्ञान के विद्यापीठ कोर विश्वविद्यालय में आप सभी विद्वज्जनों का अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कोर विश्वविद्यालय के कुलगीत के माध्यम से कोर विश्वविद्यालय के संकल्पों को, उनकी महत्ता को, उनके उद्देश्यों को मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। आशा है आपको अच्छा लगे। आधुनिक विज्ञान का है केंद्र गंगा के किनारे कोर विश्वविद्यालय हरिद्वार गंगा के किनारे हरिद्वार गंगा के किनारे। आधुनिक विज्ञान का है केंद्र गंगा के किनारे कोर विश्वविद्यालय हरिद्वार गंगा के किनारे हरिद्वार गंगा के किनारे। सेठ रोशन लाल ने विज्ञान के उत्थान को तकनीकी के ज्ञान से ज्ञान के विज्ञान को ज्ञान के विज्ञान को यंत्र तंत्र से दक्ष बालक यंत्र तंत्र से दक्ष बालक विश्व में जिसने उतारे। आधुनिक विज्ञान का है केंद्र गंगा के किनारे कोर विश्वविद्यालय हरिद्वार गंगा के किनारे हरिद्वार गंगा के किनारे। स्वच्छ वातावरण में विज्ञान प्रविधि से जुड़े विज्ञान के नूतन शिखर तक ज्ञान से विस्तार दे ज्ञान से विस्तार दे। विश्वविद्यालय की महत्ता विश्वविद्यालय की महत्ता विश्व तक हम सब उतारें। आधुनिक विज्ञान का है केंद्र गंगा के किनारे कोर विश्वविद्यालय हरिद्वार गंगा के किनारे हरिद्वार गंगा के किनारे। तकनीकी अभियांत्रिकी के साथ आयुर्वेद ने स्वास्थ्य के हर एक उपागम से समाज को जोड़ने कोर के संकल्प को मिलकर सभी चित्त में उतारें। आधुनिक विज्ञान का है
केंद्र गंगा के किनारे कोर विश्वविद्यालय हरिद्वार गंगा के किनारे हरिद्वार गंगा के किनारे ज्ञान की विज्ञान की यह चेतना हम में रहे दक्षता से पूर्ण हो हम अनवरत बढ़ते रहे अनवरत बढ़ते रहे युग युगों तक सृजन पथ पर युग युगों तक सृजन पथ पर कोर की दें सब मिसालें आधुनिक विज्ञान का है केंद्र गंगा के किनारे कोर विश्वविद्यालय हरिद्वार गंगा के किनारे हरिद्वार गंगा के किनारे कोर विश्वविद्यालय हरिद्वार गंगा के किनारे आधुनिक विज्ञान का है केंद्र गंगा के किनारे कोर विश्वविद्यालय हरिद्वार गंगा के किनारे हरिद्वार गंगा के किनारे हरिद्वार गंगा के किनारे हरिद्वार गंगा के किनारे हरिद्वार गंगा के किनारे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक रतूरी जी इस मधुर गीत के लिए। Today we have the honor and privilege to listen to a very distinguished personality whose vision and leadership have played a pivotal role in shaping the academic landscape of our esteemed institution, COER University. At this moment, I would like to extend a warm welcome to Engineer Shri J.C. Jain ji, the Chancellor of COER University. He is the man behind the success of this coveted institution. This institution has a legacy of 25 years and has been successful in its mission of becoming an institution known for its holistic education and academic excellence. He has been honored with various awards by several leading societies and institutions, some of them being Udyog Patra Award 1983, Udyog Ratan Award 1990, Uttaranchal Ratan Award year 2000. In 2014, Samvedanchal Foundation has conferred him with the title of Jain Shiromani and Jain Samaj Ratan. He is not only a prominent figure in the realm of education, but also a beacon of inspiration to all of us. Without further ado, I would like to invite him to the dais to share his insights, wisdom, and vision with all of us gathered here. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm round of applause as we welcome the Chancellor of COER University, Shri J.C. Jain ji, to address all of us. Please welcome. You're welcome, sir. Please come. Distinguished Vice Chancellors, Principals, media personnel, guests, faculty members and students, good morning to all. Today, I welcome everyone to this beautiful conclave. We all understand the purpose of this conclave is largely to bring the secondary education and the university education at one platform, to understand the problems and the growing technology in the world. How can we
compensate and integrate the recent developments. I am sure each one of you would contribute your best and you would have beautiful takeaways from this conference. Since our chief guest, Governor of Uttarakhand, is likely to be here within a few minutes. Meanwhile, to continue our deliberations, with a great pleasure and hope, I declare the conclave open. Thank you so much. Thank you, sir, for enlightening us with your words of wisdom. Dear educators and our esteemed guests of honor and chief guests, we have organized a series of panel discussions covering a wide range of topics aimed at enriching our knowledge and fostering the exchange of divergent views. Each panel is designed to address pressing issues, current trends, and emerging research topics that are relevant to our academic pursuits. In our commitment to providing a holistic educational experience, these panel discussions have been meticulously curated to offer you insights from the experts, practitioners, and scholars from across various fields. We believe that by bringing together individuals with diverse perspectives, we can create an environment which is conducive to critical thinking, intellectual growth, and meaningful discourse. Together, let's embark on a journey of discovery and intellectual exploration through our panel discussions. A Google Drive form has been shared with you on your WhatsApp groups. If you have any inputs regarding the topic, you can please share with us on that form. So on this note, let us begin with our first panel discussion on the topic of innovation and entrepreneurship in higher education. Over the next 45 minutes, we will hear from a panel of esteemed experts who bring a wealth of experience and insights on the table. Now, I will call on the moderator. Please welcome Professor Dr. Raj Singh Ji, Vice Chancellor, Jain University, Bangalore, Karnataka. So please come onto the dais and take your seat. Now, I will announce the names of the panelists and I request them to come onto the dais and take their seats. And as I pronounce the names of these panelists, I request all the audience to give them a big round of applause. Professor Dr. Ram Karanji, Vice Chancellor, ICFAI University, Dehradun, Uttarakhand. Professor Dr. Tarakeshwar Kumarji, Vice Chancellor, Central University of Haryana. Professor Dr. V.K. Ratanji, Vice Chancellor, GNA University, Phagwara, Punjab. Professor Dr. Bidhu Bhushan Mishra Ji, Vice Chancellor, Sambalpur University, Orissa. Professor Dr. Rajiv Tyagi Ji, Pro Chancellor, Sri Venkateshwara University, Gajrala, UP. Professor Dr. Dibakar C. Deka Ji, Vice Chancellor, Mizoram University, Aizawl. Professor Dr. J.K. Sharma Ji, Vice Chancellor,
Baddi University of Emerging Sciences and Technology, Himachal Pradesh. Professor Dr. Manish Srivastava ji, Vice Chancellor, Vikrant University, Gwalior, Madhya Pradesh. And as we are about to begin our panel discussion, I would like our audience to know that our guest of honor, Shri Shiv Khera ji, the renowned motivational speaker, is here. Let us all welcome him with a big round of applause. As our guest of honor is here, I now request our Pro-Chancellor, Shri Shreyansh Jain ji, to welcome Shri Shiv Khera ji and offer him our sacred Tulsi sapling. Okay, हमारे Chancellor sir, Shri J.C. Jain ji will welcome Shri Shiv Khera ji. I request other panelists also to please come on the dais. Dr. Pankaj Gupta from Jindal Global University, Dr. Akshay Gulati, Dr. Sri Hari Hon'ble, Dr. Pankaj Mishra, kindly join us on the stage. Kindly come. Please come. A guest of honor this morning, Dr. Shiv Khera Sahab, Honorable Chancellor, Vice Chancellor, other principals officers of the university, fellow Vice Chancellors from universities across the country, principals of renowned schools from the country, delegates, ladies and gentlemen. At the outset, I congratulate COER University for conceptualizing this Bharat Gyan Samagam, and thank you very much for having us all this morning. I must mention that in school days, one call from the principal used to be very difficult. Standing in front of so many principals, I think sends shivers down my spine. Indeed, honored to be standing before all of you in this session and moderating it. We have 30 minutes as per the schedule, and I think we are 6 + 7 speakers, but believe me, we'll try to do justice with this panel. Few points before I throw the questions at the panelists. We all are going through the implementation of national education policies, universities or schools alike in the country.
Friends, it didn't happen in 2020. It started happening 5 to 6 years before, particularly when the committee to draft NEP was constituted. And particularly from year 2014, when we became signatory to the Washington Accord, NBA signed on behalf of India. The first point I want to mention is that we are aware that research in the universities and institutions of higher education or in the research institutions converts data and information into knowledge. And in this process consumes money and keeps consuming. And we keep cribbing about where are the resources. Unless we create a system where this knowledge is converted back into the money, the cycle will not be completed, will not be sustainable. And this work of converting knowledge back into money is done by innovation, which is the topic of today's panel discussion. The second point we need to keep in mind, I'll request the panelists and also the audience whose questions I'll invite in between. In the recent past, there has been huge demand on the innovation system of the country, particularly during the COVID. People said to scientists and engineers, guys, deliver vaccine. And they delivered in less than 1 year. Now what they did, instead of appreciating, we have raised our expectations from the scientists. We say, predict what will happen a year or two from now and find solutions right now. We don't have time to wait. And if you look at the innovation system of the country, universities are a major part of innovation system. And within the universities, teachers alone cannot do much. Unless we involve every student, we can't contribute towards the innovation system. You all are aware that as a country, we have moved quite a bit from 81 to 40th position in Global Innovation Index. Number of patents have reached barely about 70,000 last year. Maybe this year report came in. In the same time, China has filed 14,97,000 patents. We are now more populated than China. We need to really think about it and ponder on this issue. And the third and last point I'll mention in the opening remarks is that the new accreditation system, which has been almost finalized 10 days ago, has added a whole new criteria of green initiatives. And the purpose is that all the activities of higher education or school education system have to be aligned with Sustainable Development Goals of United Nations, or as we call it, Agenda 2030. We need to think about it. We are not only going to attain the outcomes, we need to now start measuring the impact of it. And when we talk about impact, innovation and entrepreneurship becomes a very, very crucial thing. Unless we promote this, we cannot really create any impact. And therefore, I think right in the beginning, a very, very important session, and I have with me known experts, vice chancellors of various universities. I have known them personally, most of them, and therefore there's no point in stretching on the introduction part of it. It's already in front of you. What I've done, in the interest of time, we have written down some questions. I'll be throwing the questions one by one. Anybody can take in the sequence, and then others can supplement. And like this, we'll try to cover 3, 4, 5 questions. I'll also request the audience to keep ready certain questions. I'll invite questions in between so that we can keep the session very, very dynamic and we can contribute to the purpose of the session. And my request would be, please restrict your answers to 2 to 3 minutes initially, and then others can supplement so that we can finish on time. We have about 25 minutes left. My first question is that one of the recommendations of National Education Policy says that we need to extend research to innovation and entrepreneurship. A very specific recommendation has been made, which means that the research we undertake today is of no use unless it helps us find solutions to the real life problems of the society, the community, or the industry. I would request to share with us that how has your university or the institution you come from understood this recommendation. So first is understanding part of it. Does it still remain a statement or some action has been taken? If yes, kindly share with all of us. May I request Dr. J.K. Sharma take this question first and then others can supplement? Pankaj ji, welcome. You came right here.
Yes, sir. Over to you. You can keep sitting and then speak. No problem. Thank you, sir. Hello. नहीं, ठीक है. Thank you, sir, for giving me this opportunity to be over here and to express my views that what my university is doing or where we have gone through or how we are planning to start with the new ventures which the NEP has suggested. And it is being suggesting at time to time too. You know, rightly said by Dr. Raj Singh that the marriage between the innovation and entrepreneurship, unless it is not successful marriage, its outcomes in the form of what we have spent to conduct the research, to have its outcomes, and then ultimately to reflect and to yield in such a way that whatever we have spent with multiple times of its interest, it is back to the society. I think it will depend upon university to university, depending upon its location too, and what type or what kind of the entrepreneurships or the industry it is present, it is prevalent nearby those areas. We have to divide this type of the marriage, that the innovation and entrepreneurship in different parts, right from 1, 2 to top of the situations, local to state to national and then to international level. To me, the good thing is that the location of my university is in the hub of Asia's largest industry, Bhatti University. Bhatti is the largest hub of the pharma, as well as the other type of the industries over there. Now, when we say that innovation, it is good that the university can take up the innovation part. What innovation is required presently in my vicinity? That has to be taken into consideration first. It means the outreach to the industry, outreach those parts where I can contribute, my university can contribute more of the innovations in such a way that immediately whatever the innovation is there, that can contribute to the society in the form of entrepreneurship in the existing paraphernalia or existing situations wherever it is. Henceforth, we have just increased our outreach to the students and to the entire research staff in such a way that we are approaching the industry and industry is approaching to us every day with different type of those issues which can be taken care of for immediate attention. Maybe for within 1 year, within 6 months, within some time. So, Dr. Sir, I think you're mentioning the local context is quite important in this, and the location of university is extremely important. Any of the panelists would like to add to what Dr. Sir said? Dr. Srihari. I think this is a direct take from what's happening in American universities. Unless your research gets converted into entrepreneurship, that means the researcher himself starts believing in his research, as you rightly pointed out, the research is going to be a sink rather than, creating source. Although it must be accepted that not every idea, not every new thing is going to be a worthwhile business idea. But until and unless your own professors and students together form a business entity out of every innovation you have created, internet is a great example of such an endeavor. I believe IIT Delhi has done quite a bit of wonderful work. Professor Ramgopal Rao has done a wonderful job. BITS Pilani has several examples of something. So, Dr. Sir, this takes me to another question. I think looking at the local context and what you mentioned, well, let's talk in a framework within which an academic institution operates.
if you look at the gist or the soul of national education policy, I'm referring to again and again because that's one document which is driving all our endeavors. Outcome-based education. In simple words, I say, till now we all have been delivering education, we have been great professors, our students have done great, they have also gotten jobs, they have become entrepreneurs. But somewhere we know that we don't know why did it happen. Outcome-based education says in advance that we know well in advance what will happen 3, 4, 5 years down the line, which means making education intentional and not leaving it incidental. That's what outcome-based education in summary talks about. How can the curriculum design or the instruction design which you follow in the context of OBE opens learning opportunities for the students in which they demonstrate their innovative acumen and which can further be taken to problem solving, entrepreneurship ideas, startup ideas, kind of things. Some of the initiatives universities have taken, I'll also share with, of course, of you, will really help all the audience to take home some ideas and implement at their universities. Would you like to start? I'll start, others can add. I think by very design, outcome-based education, which we are calling it, has interesting structure to it, which if the university really innovates and allows faculty members the freedom to design and deliver in a form which they would like to do. It's a great opportunity wherein not just innovation and entrepreneurship, because that's the topic we are discussing, but even the learning outcomes which we all the time keep thinking have not been delivered, the skills which have not been delivered, the knowledge and most importantly, the learning abilities which are not being developed in our students, I think all can be delivered through outcome-based education. Once faculty is empowered to define the outcomes, how they want to evaluate it, how they want to, the pedagogy which appropriately ensures that that delivery happens, and the freedom for students to opt how they want to really express themselves. I think that's very, very important part, and it can be used, OB can be used. I'll move to Akshay is there. How, what Dr. Shehari mentioned, taking it the idea forward, how do you think the curriculum design can promote entrepreneurial thinking? I know that we can't make everybody entrepreneur, but we can make everybody thinking entrepreneurial, which also makes them more employable. Yes. Thank you so much. So first of all, I'll start off with the previous question, which is outcome-based education. I think first of all, at the university college level also, what we need to do is we need to reimagine the kind of outcome that we as universities have, right? Instead of imagining the outcome as 90% placement, 95% placement, let's reimagine it as having 90% students started their own ventures, right? Started their own ventures and created so many jobs. So I think that reimagining, that reshaping could actually create a lot of impact in the long run, in the future, right? Coming to the question specifically, how could curriculum be changed? I think it's a three-pronged system that we'll have to follow. The first one will be having that mindset change in the students to pursue entrepreneurship, to have that kind of an exposure from the industry, to have enough opportunities being given in terms of hands-on projects, real-world projects, industry projects, and real-world experiences in terms of internships as well. So that could be one. Second could be, I think, on the curriculum level, a lot of guidelines have come in form of NEP, but I think basic business education, business skills have to be incorporated. We'll continue. We welcome our chief guest who is about to arrive, and they'll continue with the questions. मैं सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वो खड़े होकर हमारे मुख्य अतिथि हमारे राज्यपाल महामहिम श्री लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी का स्वागत करने के लिए सभी खड़े हो जाएं।
हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं, सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी राज्यपाल महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आप सब लोग तैयार हो जाएं, हम राष्ट्रगान का शुभारंभ करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। अब मैं अनुरोध करूंगी हमारे वर्दी चांसलर इंजीनियर श्री JC जैन जी से कि वो पुष्पगुच्छ से हमारे महामहिम का स्वागत करें। पवित्र तुलसी का पौधा आदरणीय राज्यपाल जी के। अब मैं अनुरोध करूंगी कि हमारा पैनल डिस्कशन शुरू किया जाए। Thank you. It's indeed an honor to be standing here in presence of the Honorable Governor. Thank you so much, sir. So, and Akshay was mentioning that curriculum design can greatly help us in creating an ecosystem of innovation and entrepreneurship. One question which, particularly in the presence of Honorable Governor and some of the policy makers, I come from state of Karnataka. I have been associated with some of the universities of Uttar Pradesh. One concept in both the states is common. One district, one product. The governments come up with a policy where each district can promote the products in which they have a history. They are very strong qualitatively, resource availability wise and talent availability wise. I'm sure other states must be having certain such policies to promote an ecosystem of innovation, research and academia. If some of the panelists can share, but I would definitely like to share from state of Karnataka, taking cue from this concept, we introduced, which was also referred by Akshay and Dr. Srihari, project-based learning, which also National Education and Policy talks about. We extended a bit more and we called it project-centric learning. Now, project-centric learning is very different from project-based learning for the benefit of faculty members and the youngsters. In project-based learning, it's a part of a subject. In project-centric learning, all the subjects converge on the project idea. So it's by definition inter-transdisciplinary. Students of different backgrounds come together and work on a common topic, and that topic revolves around that one product which each district promotes. So certain groups take a particular product of one district, another one will take, and this way we created 4,600 groups. We are a university of 25,000 full-time students. In first year, we had 20 successful case studies awarded by Governor of Karnataka. Second year, I had 440 successful case studies. And this year, we are looking at about 2,000 successful case studies. 130 students have been able to earn their entire fees. And this opportunity is available to every student irrespective of discipline they come from. Because research does not stop us from there. We say research is meaningful if it can take out money from somebody's pocket.
If you can show me, even if you earn 200 rupees or 2000 rupees using your innovative idea, and that's where student starts working. Believe me, the number of startups have increased in the last 3 years significantly. It's gone up compared to past, even though we are known as entrepreneurial thinking university, but this has definitely created an ecosystem which is much better than what it was in the past. Any of the panelists would like to, please, Dr. Pankaj Gupta, if you could add on to what I said and maybe some of the ideas of your state. You come from state of Haryana, you worked in other states also. That will be very, very useful. Thank you. Mahim ji ko namaskar, or Adharani Chancellor sir and all respected people here. I would like to say innovation, what we call is like a Navachar, and also entrepreneurship is part of our Indian culture. We talk about Viksit Bharat because Bharat has always been doing great, and the whole route was through the entrepreneurship. Now the question is that our universities have glorified, and the other IITs and IIMs, that you're getting like a 2 crore package, then you are great, then people are getting glory and all that. So the question is that I'm an accounting professor and also now in the Indian knowledge system in OP Jindal at the moment. So we talk about we get what we measure and reward. So the whole narrative has to be such. We talk about working in MNC. What about creating an MNC? MNC is like meri nai company. My new company is MNC. So we need to change those kind of a situation. And we need to build around a very good kind of a aura. And many times what happens, a great idea, you come and discuss with the professor. Professor is having a certain kind of mindset. So some good idea will die, which can become a great idea. So we need to find out कि ये हल्का सा दिया जला, उसको कैसे protect करना है, how to nurture it. तो उसके लिए क्या कि professor और जो dean और directors हैं, they also have to come out from their mentality. And many times, so much, we, the Vice Chancellor, also have a lot of ego-based approach. So ego also have to be down. हमें एक moment में सोचना है कि हम क्या add कर रहे हैं संस्था के लिए, कितनी नई कंपनी हम create करें. जैसे राज सर ने कहा या सर ने mention किया था कि नहीं साहब हम इतना हमारा average package नहीं होगा. How many unicorns are coming from us? तो अगर हम इन चीज़ों को एक nurture करेंगे in a proper way, तो आई थिंक वो दिन दूर नहीं कि हमारा, जैसे हम लोग सिलिकॉन वैली अमेरिका में एक देखते हैं, हर एक स्टेट में एक बढ़िया सिलिकॉन वैली होगी. मुझे ऐसा फील होता है. तो मैं ये कहता हूँ विल पावर, चेंज ऑफ द माइंडसेट, पैशन, एबिलिटी एंड फेथ, जिसको हम कहते हैं रुचि, योग्यता और विश्वास. और नवाचार ऐसे नहीं आएगा. वॉट जैसे होता है कि आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, वो उस डोमेन में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम ऑलरेडी जानते हैं उससे नवाचार नहीं निकलेगा. उसके लिए ज्ञान और ध्यान भी चाहिए, मेडिटेशन चाहिए, माइंडफुलनेस चाहिए. इन चीज़ों से हम आगे चल के इनोवेशन भी करेंगे, उससे नए Thank you, Dr. Sir. I think you did mention that while government and other agencies can take steps in creating the ecosystem, but ultimately it depends on all of us. What we do in the classroom. हमें ही आप दीपू भगवा हम ही को बनना है रास्ता. Dr. Ratan sir, some of the challenges which Dr. Pankaj Gupta mentioned are well taken. One of the prominent one being the mindset of all of us, including vice chancellors and faculty members. Any other challenges you would like to share, which perhaps can be taken up and then we create a better system of ecosystem? Yes, respected Governor sir, Chancellor and the other dignitaries. The institutions, we are trying to align with the NEP policy. And for that, we are facing many challenges in bringing the entrepreneurship culture into the institutes. The major, I'll mention few of them. One is the infrastructure shortage. The infrastructure is available in many of the institutes, colleges, but the lack of space for putting the incubation, lack of funds, are major problems which the institutes are facing. The other are the limit. This infrastructure is now limited. There is also a cultural mindset. The students, what we think is
every student thinks that he has to excel in the academics. He doesn't think, his mindset is about the academics. He is not going to think about the new innovations, new entrepreneurship, that how he should go. He should not be a job seeker, he should be a job giver. So that mindset, the cultural mindset in the students that we have, it is the job of the institutes, the job of the teachers to change the mindset of all these students so that they also start thinking the new innovations. What the students feel is, the other thing is that we have to change the evaluation. Now the evaluation for the theoretical part is set. All institutes, they have the set of the structure, the evaluated papers are evaluated. But how to evaluate the skills? This is also a big challenge for the institutes. How to evaluate the skills? So I think Dr. Ratan has brought a most pertinent issue. Examination and evaluation, friends, is not only a method of putting a label on the student, your A plus, A or A minus or B plus kind of grade. It's the assessment system which authenticates the curriculum, its relevance, its efficiency, its efficacy whether it is delivered. And unless we change the examination and evaluation system, which is age-old conformity based, or one size fits all kind of system, we will not be able to do much, particularly in terms of creating an ecosystem of innovation and entrepreneurship. I'll take next question from the audience. Only one question will take. In the meantime, if I quickly summarize what I've gathered, is that in addition to mindset change, we need to empower our students. We teachers are notorious for keeping the powers in our hands. We don't allow our students to experiment. My request would be that give them some freedom. They'll surprise you every time and each time you give them the freedom. This is number one. Number two, the universities and departments within the universities need to start working together. The old practices are that we don't look eye to eye. Interdisciplinarity and transdisciplinarity says we sit down together, we plan together, and sometimes deliver the courses together. This expansion of learning opportunities through inter and transdisciplinary thinking will create the wonders. I'll strongly recommend another thing at the end before I take one question from the audience is that I came across Deshpande Foundation in towards the western part of Karnataka in Hon'ble area. They have set up 2 sandboxes in India and 4 sandboxes abroad. Harvard Business School is doing a case study on this, and how, with the help of university students, they have created revolution in the rural areas. They have got hold of so-called school dropouts and college dropouts, and at the grassroots level created entrepreneurship, serving masses in that part of the country. Those kind of concepts can be replicated with the help of each university. I would rather recommend that each university should set up a sandbox within its premises. Imagine if we have 1100 plus such sandboxes, what kind of a revolution we can create. We can benefit from concepts like one district, one state, and many other initiatives taken in the ERP and what is happening in the university campuses. Any audience would like to throw a question at the panel? Yeah, please go ahead. Can somebody pass a mic? Be brief in asking question, please. And Dr. Pankaj, if you can take the question first. You have not spoken till now. Okay. Please shoot the question there. It's here, right here. Beta, sir ko de dijiye. Yeah, go ahead. Hi, good morning, everyone. My all respect to the guys. I think I have been attending a lot of conferences on my own expenses, and I'm from a government schools, have been working for 40 years in rural areas and taking out the laborers' children and converting them into something called brands. The DICE knows the problem. The DICE has come out with some solutions also. But then who is running the DICE? All the
VCs, I think they are paid nicely. And that is why, and I don't know whether they have been being paid nicely also. 3 lakhs is a very, or 4 lakhs is a very... Sir, can you come to the question, please? Yeah, I am coming to the question. Do we have any university course for the sweepers, for the this garland makers, for anyone who is a street vendor? When are we going to have the courses for them? If we are going to make India a Viksit Bharat, I think curriculum should include something for them. Is there any proposal by the government, or we are still in the clutches of the IS officers who decide everything? Let me try to answer, sir. I think we have some answers on this. Yeah. Okay, if something similar to this, we can close the question, otherwise... Please be brief. Good morning, everyone. The 2 words are used very frequently. One is the innovation, another is the entrepreneurship. In my opinion, entrepreneurship is not just a business. It would be a business, but the business which is untapped area. So how to tap those areas, and innovation is triggering all those areas which is problem related. So if we shift in a very innovative way to address this entrepreneurship, which will be thinking about untapped area. So my question for the panelists, so please focus on this, what is untapped area, so that we can focus more into that. Thank you very much. Thank you. In fact, your question and answers also. We need to bring in problem solving based kind of education system where not only faculty members but students also get engaged in identifying the problems of community, society, industry, day-to-day problems. Sometimes the problems are identified within the campus and they solve it. In fact, our students have solved, and I'm sure everybody has experiences. So you gave answer also. Answering your questions are about the skills. I'm a strong advocate, and many universities done it already. There are Government of India schemes, there are state government schemes. If every university can open a center for skill development, believe me, unskilled, semi-skilled people can be trained and they also get placed. There are many industry houses coming forward, sponsoring these programs, supporting the government initiatives, and there's a revolution happening. My request would be, like, you come from a rural area, each one of us sitting in metropolitan cities move out 40-50 kilometers and see what is happening there. So what I would say that we are aware of it, some of us may not be aware, we blamed ourselves that we have to change our mindset as vice chancellors. But then things are happening. Need is that everyone should come forward and join hands together and support the government initiatives. I'm making a statement many of you may not like. For the first time in the history of education or in the history of independent India, regulatory bodies are ahead of us, all professors and principals. We do not know whom to blame. And the only thing we can do is to make meaningful that 1 hour which you spend in the class, or 40 minutes or 35 minutes you spend in the class, and nothing else needs to be done. The government didn't stop there. They said, we don't want to tell you how to do it. We are given a framework, we are given a direction, you decide how you want to do it, and then implement and go ahead. Sir, I spoke to chairman of UGC and AICT then, Shastra Buddha sir over there. You know what he said? Don't worry about norms and standards you have prescribed. They are the minimum required. If you can make students employable and who can start their own business, bring to us, we'll regularize everything which you have violated. That's the openness which you see from the government agencies. And therefore, I only say it is up to us, all of us sitting here and in the audience and back then in our institutions, who have to rise to the occasion and then take the helm. And the last point, okay, so quick one please. I think we're already short 5 minutes. Basically my question is, I am Professor Shahid Rasool, Dean Academic Affairs in Central University of Kashmir. I have been in higher education for over 30 years now. My confusion is rooted in the excellent ladder of education that we have in India. We have schools, we have colleges, then we have universities. We have IIT, we have ITIs, we have polytechnic colleges, then we have engineering colleges. So all of these institutions have a specific role to play at a specific level. My question to the panelists is, are we confusing ourselves
when the universities are also jumping into Skilling India program, involving taking away the work that could be done in the IITs, ITIs, polytechnics, are we also stressing ourselves too much and not using the facilities that are already available in my country? In my country, like in a university, when we start smaller programs, like there was this program of BVOC courses in the universities. BVOC was basically the vocational courses which goes for the skilling. Got your question. Cannot these be done by those institutions which are already there and we strengthen them? I think you got the question. I have a confusion, I want that confusion to be removed. Thank you. महामहिम की उपस्थिति, गर्ममय उपस्थिति को प्रणाम करते हुए और जैन साहब और विश्वविद्यालय परिवार को धन्यवाद और साधुवाद देते हुए कि जो काम शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों का काम सरकारों को करना चाहिए था, वह जैन साहब ने इनिशिएटिव लिया। 500 से ज़्यादा स्कूल के प्राचार्यों और 60 से ज़्यादा वाइस चांसलर की इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। जोरदार तालियां इस उपस्थिति के लिए। और मेरे मित्र रसूल साहब का जो प्रश्न है कि स्किलिंग के लिए हम जंप कर रहे हैं, विद्या ददाति विनयम विनय ददाति पात्रता। We never thought about, we always have a, mindset of पढ़ो लिखो नौकरी करो। स्किलिंग के बारे में बात ही नहीं होती थी। Similarly, we were termed as a developing country and we have celebrated 75 years of the independence. किसी ने तो सपना देखा कि हम विकसित भारत बनेंगे और हम 100 साल जब पूरे करेंगे हम विकसित भारत होंगे, और एक सपना 11 दिसंबर को प्रधानमंत्री साहब ने देखा। जोरदार करतल ध्वनियों के साथ उनका भी अभिनंदन। आपका जो प्रश्न है स्किलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, बिकॉज वी आर एबल टू जनरेट द ग्रेजुएट. It was quite important when we just get the independence. We have to produce the workforce, for the various industries, various institutions to run it. But now is a time that everybody will, think that everybody will get the government job, nobody can survive. Government job is not the employment. So if somebody is skilled enough, maybe like OSLP, ODOP, one state, one product, one district, one product. Why don't we, I'm coming, representing local university Saharanpur. In Saharanpur, it is known for the wood city. The fantastic wood works are there, but they are not literate. So what I'm doing, I think connecting them to the students so that they can understand. What Dr. Pankaj is saying that the movement has started. We are answering questions specifically last 30 seconds. Professor asked the question. National education policy talks about no hard separations. I don't know if you have heard this word or not. It's a prominent recommendation right in the beginning of the policy document, which says, let us stop creating these separations in specialized institutions. This is medical university, this is paramedical, this is women, this is men, this is skill. It has not worked in a country. They say same campus should be functioning in an integrated fashion. So what you must have seen, government has come out with the regulation cluster institutions. All types of institutions in the vicinity come together and form one entity so that the existing expertise can be used, can be integrated. Engineering colleges are accused of not developing the skills, but IITs don't do it. So the only way is to come together, create an ecosystem and create those skills together. A lot is happening, I agree with you, but it's in line with the policy direction. They have to come together, they can't exist in isolation because isolation does not work. Real life is not isolation, real life is coming together. Real life is multidisciplinary, real life is interdisciplinary. If our lives are multidisciplinary, how can we talk about single discipline? How can we talk about one part of education without the other? So the no hard separation is the answer to your question, sir. I thank all the panelists within the time. Of course, we're short by 5 minutes. Apologies for that. Thank you so much for contributing, Singh. Thank you, sir. It's an honor speaking in your talk. Thank you so much. थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर राज सिंह इस बेहद ज्ञानवर्धक सेशन के लिए। शिक्षा विकास का आधार है और विकसित भारत अभियान में आपके इन मूल्यवान विचारों के, सभी पैनलिस्ट के इन मूल्यवान विचारों से इस अभियान को बहुत बल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, now we are going to release the souvenir for Bharat Gyan Samagam 2024. And for that, I would like to invite our
Governor, Honorable Governor, His Excellency Lieutenant General Shri Gurmit Singh Ji to the stage. I also invite our worthy Chancellor Shri J.C. Jain Ji, our Pro-Chancellor Shri Shreyansh Jain Ji, Vice Chairperson Srimati Sunita Jain Ji, Executive Director Srimati Charu Jain Ji, Shri Jagmohan Singh Rana Ji, Shri Shiv Khera Ji, Pro Vice Chancellor Dr. B.M. Singh Ji, Pro Vice Chancellor Dr. S.P. Pandey Ji, Registrar Dr. Manish Kumar Mathur Ji, Thank you. I now request all the dignitaries to take their seats. Thank you. Ladies and gentlemen, today we have a very well-known personality, Professor Jagmohan Singh Rana ji with us. Professor Jagmohan Singh Rana ji has been awarded with various honors and awards, and prominent among them that he is an associate of International Center for Theoretical Physics, Italy, under the aegis of UNESCO. He's also been awarded by DAAD, that is German Academic Exchange Program Fellowship, from 1996 to 1998. Abdus Salam Fellowship by ASICTP, Trieste, Italy, in 2004. Research Associate of UGC, Government of India. He's also a member of prominent scientific organizations, and well-known among them are IAPT, that is Indian Association of Physics Teacher, IAGRG, that is Indian Association for General Relativity and Gravitation, Einstein Foundation International, SNTS, Solid State Nuclear Track Society, and district coordinator. He's also a district coordinator of UCOST, Government of Uttarakhand. So I would like to request Dr. Jagmohan Singh Rana ji, he's a former chairperson of UKPSC, to come forward for a brief presentation on the topic of vision for Indian universities. Ladies and gentlemen, please welcome. नमस्कार। मेरा संक्षिप्त परिचय देने के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया।
भारतीय ज्ञान समागम के माननीय मुख्य अतिथि, इस प्रदेश के यशस्वी, ओजस्वी और तेजस्वी महामहिम महोदय, जनरल साहब, जिस सुंदर प्रांगण में माँ सरस्वती की आराधना के लिए हम सब लोग आए हैं, उस प्रांगण के शिल्पी, इस भव्य विशाल भवन और इंस्टीट्यूशन के विश्वकर्मा श्रीमान जैन साहब, प्रो चांसलर श्रेयांश जी, सुनीता जी, और हमारे बीच में हम सबको अपनी किताबों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से प्रेरणा देने वाले ऐसे श्रीमान शिव खेड़ा जी, कोर विश्वविद्यालय परिवार के समस्त फैकल्टीज, यहाँ पर देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए श्रीमान कुलपतिगण, विद्यालयों के प्रधानाचार्य जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के आचार्यगण और विद्यार्थियों, वास्तव में ये समागम आप अपने आप में बहुत अद्भुत है, जिसमें शिक्षा के और सभी घटक जो शिक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, जो शिक्षा का और जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में लगते हैं, वो सभी घटक यहाँ उपस्थित हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही सुंदर यज्ञ है। इस सुंदर यज्ञ में मुझे भी हवि अर्पण करने का ऑर्गेनाइजर्स ने ये अवसर दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और इस यज्ञ की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जैन साहब, जब मैं पहली बार इस परिसर में कभी आया था, तो सामने जो फोटो लगी है, मैंने वो फोटो देखी और अनायास ही मेरे मन से निकला, संता भूमि तपसा धारयंती। और ये जो वेद वाक्य है, ये निरंतर मेरे मन में गुंजायमान रहता है जब भी मैं कोर के बारे में विचार करता हूं। बंधुओं, ये जो रत्नगर्भा वसुंधरा है, इसमें ईश्वर की सबसे अनुपम और अप्रीतम कृति मनुष्य है। मनुष्य अपने भाव विचार से और जो शेष सृष्टि है उससे जिस प्रकार इंटरेक्ट करता है, उसकी वजह से हम उसे व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि उस व्यक्त करता है अपने कर्तव्य के माध्यम से, करता है, व्यक्त करता है, इसलिए उसे व्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति जिस कर्म को करके सृष्टि में रहता है, उसके आधार, कृतित्व के आधार पर उसका एक व्यक्तित्व बनता है। और वो व्यक्तित्व जब समाज उपयोगी होता चला जाता है, बहुआयामी होता चला जाता है, जैसे अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, इट्स हैज टू बी ऑल इंक्लूसिव, तो बहुआयामी व्यक्तित्व धीरे धीरे एक इंस्टीट्यूशन का रूप लेता है। उसको हम लोग व्यक्ति न कह करके संस्थान कहते हैं। और जब व्यक्ति निरंतर समाज साधना में अग्रसर रहता है और समाज साधना करते हुए जीवन के उन मूल्यों को अपने जीवन में अवधारित करता है, तो धीरे धीरे वह विचार बन जाता है। आज बहुत सारे व्यक्तित्व हमारे सामने विचार हैं, और जब विचार बनता है, विचार असीम होता है। विचार की कोई सीमा नहीं है, विचार असीम है, विचार प्रवाह है, विचार तरलता है, विचार सुगमता है, और विचार सातत्य है। विचार की सीमा खत्म हो जाती है, सब सीमा रहित हो जाता है, तब हम कहते हैं सा विद्याया विमुक्तये। तो हमारे जो ये अवधारणा है, विद्या वो है जो मुक्तता देती है, जो तरलता देती है, जो प्रवाह देती है। और आज हम उस प्रवाह के लिए ही, उस प्रवाह में हम लोग गतिमान हो सके, उस प्रवाह में हम लोग सामंजस्य बिठा सकें, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो विद्या हमेशा मुक्तता देती है, बंधन नहीं देती। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ सीख करके हम लोग बंधन में हैं, तो विद्या मुक्तता देती है। आज के विषय के संदर्भ में हम विचार करें, ऐसा यह देश जो एक चिरंतन पुरातन देश है,
यदि हम लोग सभ्यताओं की बात करेंगे, संस्कृतियों की बात करेंगे, तो हम सबसे पुरातन दिखते हैं। लेकिन जैसे अभी डिस्कशन में आ रहा था, जैसे जो अभी पैनल डिस्कशन हुआ था, कि हम लोग जब इसमें आधुनिक परिवेश में और उसको तोलते हैं, आधुनिक परिवेश में उसमें कंपैरिजन करते हैं, तो लगता है कि विश्व में कहीं पर हम लोग कुछ पिछड़े हुए हैं या कुछ पिछड़ रहे हैं। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है आज कि हम लोग सोचें, जो देश जिसको प्रकृति ने इतना सुंदर बनाया है, जिसने कहिए कि देने की दृष्टि से अगर विश्व में सर्वोत्तम कोई है, चाहे वो डाइवर्सिटी का सवाल हो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों का सवाल हो, चाहे किसी भी प्रकार की बात हो, इतना सुंदर देश, क्योंकि मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में गया हूँ, इतना सुंदर देश और ईश्वर निर्मित, देव निर्मित कहीं और है नहीं जैसा हमारा भारत देश है। उसके बावजूद भी और हमको ये क्यों सोचना पड़ रहा है, ये क्यों देखना पड़ रहा है आज कि हम लोग कहीं पिछड़ रहे हैं। मैं बहुत सारे रैंकिंग्स की बात नहीं करूंगा, मैं उस डायमेंशन को लेकर के जाना चाहता हूं जो डायमेंशन कहीं पर अभी कुछ कालखंड की वजह से मिसिंग हो गया था। एक कवि कहता है, एक गलती हम ताउम्र करते रहे, धूल चेहरे पे थी और हम आईना साफ करते रहे। ऐसा लगता है कहीं पर कि हम लोगों ने जो यात्रा अंदर की थी, जो अंतर्मन की यात्रा होनी चाहिए थी, वो बहिर्गमन की यात्रा कर ली। हम लोग आईने को साफ करते रहे, चेहरा नहीं साफ किया। जो यात्रा अंतर की होनी चाहिए थी, उस यात्रा से हम लोग कहीं पर विलग हो गए, हम लोग बहिर्मुखी हो गए। इसलिए हमको अंतर्मुखी होना पड़ेगा, हमको परतें उघाड़नी पड़ेंगी। We have to return to the fundamentals. हम सब लोग यहाँ पर विद्या और विद्यार्थी हैं, विद्या के क्षेत्र वाले हैं। किसी भी विषय में जब it becomes tough, then we go to the fundamentals and the going becomes easy. तो आज भी हमको लौटना होगा, we have to return to the fundamentals. हमको परतें उघाड़नी होंगी और ये बात बिल्कुल तर्क सत्य है और हम सब लोग इस बात को जानते, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि रिटर्न टू द फंडामेंटल का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। एक ही रास्ता है टू फंडामेंटल जाने के लिए, वो है शिक्षा। क्या है शिक्षा? शिक्षा मात्र सिद्धांत नहीं है, शिक्षा अतीत का कोई एक निश्चित विधान भी नहीं है। ये तो वास्तव में, शिक्षा तो वास्तव में अपने अंदर निहित अनुभूत सत्य से साक्षात करने की, उससे साक्षात करने की एक अनवरत जिज्ञासा है। हम सब लोग उदाहरण जानते हैं, हमारे पास अनवरत जिज्ञासा के बहुत सारे उदाहरण हैं। आगाज से वार्ता करने की एक निश्चल चेष्टा है। हम लोग इस बारे में बहुत सारे उदाहरण जानते हैं, आज कहने का विषय यहाँ पर नहीं है। आज भी हम कहते हैं कि अगर अटल सत्य है तो कहते हैं ध्रुव सत्य है। तो ऐसे आगाज से वार्ता करने की निश्चल चेष्टा है। शिक्षा वर्तमान का वक्ष है जिसमें समस्त परिवर्तन का पहिया घूमता है। और शिक्षा मात्र शास्त्र नहीं है, शिक्षा प्रयोग भी है। और हम सब लोग जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि प्रयोग भविष्योन्मुखी होते हैं, हमेशा यात्रा करते हैं, प्रयोग यात्रा करते हैं, भविष्योन्मुखी होते हैं। इसलिए ऋग्वेद का कवि, सबसे पहला वेद, ऋग्वेद का कवि कहता है असतो मां सदगमय, यात्रा की बात करता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यात्रा की बात करता है। हमारी जो सोच है, जो कि किस तरह से जर्जर हो सकती है, बूढ़ी हो सकती है, उसमें संभावनाओं का नया सूर्योदय अगर कहीं से आता है तो शिक्षा से आता है। और शिक्षा कैसी भी हो, कहां पर की भी हो, अनायास सृजनशीलता को जन्म देती है। सृजनशीलता के लिए उसको जो अमली जामा पहनाता है शिक्षा को, उसको हम लोग कहते हैं संस्कार। तो वास्तव में क्षमा कीजिएगा, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ढीला था इसलिए मुझे बीच में ये करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि शिक्षा से जो अनायास सृजनशीलता है उसको अमली जामा पहनाता है संस्कार। तो जिन भाव विचारों की मैं बात कर रहा था, जो भाव विचार हमारी सृष्टि में और इंटरेक्शन जिससे ये पूरा संसार बनता है, मेरा संसार बनता है, वो भाव विचार
तो यदि हम उसमें तर्क करते हैं तो कहते हैं भाव की प्रतीति संस्कार से है, संस्कार की अभिव्यक्ति विचार से है, विचार की परिणति सरोकार है और सरोकार का प्रतिफल व्यवहार है। तो यदि हम लोग उस इंटरेक्शन की बात करें तो वास्तव में भाव जगत से और व्यवहार जगत की यात्रा, और इसको अंडरलाइन करिएगा, अर्थकारी यात्रा, भाव जगत से व्यवहार जगत की अर्थकारी यात्रा का नाम शिक्षा है। सूक्ष्म से और स्थूल की उस यात्रा का नाम, जिसमें कि सूक्ष्म जो प्रिस्टाइन ग्लोरी प्योरेस्ट फॉर्म है उसको इंटैक्ट रखते हुए सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा का नाम शिक्षा है। इसी को विवेकानंद जी कहते हैं एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन विद इन। और भाव जगत से पवित्रता की जो यात्रा है उसकी जो प्रकटीकरण है व्यवहार जगत में, उसकी जो साधना है उसको हम लोग शिक्षा कहेंगे। और इस बात को भारतीय ऋषि कृषि संस्कृति के सनातन प्रवाह में स्पष्ट रूप से कहा है कि वो बाह्य जगत कैसा है, वो बाह्य जगत कौन सा है जिसमें हम लोग और इंटरेक्ट करते हैं। उसमें कहता है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। और जब हम कुटुंबकम की बात करते हैं, जो इस फील्ड ऑफ इंटरेक्शन की बात करते हैं, वो कुटुंबकम इज इंट्रिंसिकली ऑल इंक्लूसिव। उसमें चर अचार चर चराचर सभी हैं, जल थल नभचर सब प्रकार के हैं, वनस्पति कृमि सब प्रकार के उसमें हैं, उनसे इंटरेक्शन की बात कही है। अच्छा, चूंकि समय बहुत कम है आ गया करके, तो मैं कह रहा था कि जो वसुधैव कुटुंबकम जिसको अभी G20 का भी हमने लिया, उसमें ये बात हमने कही कि इस इंटरेक्शन के लिए इट इज मी इन इंडिविजुअल जो रिस्पॉन्सिबल है उस बात को करने के लिए। मुझे इंडिविजुअल देखना पड़ता है कि एक व्यक्तिगत जीवन के लिए हम कैसे उसको उस शिक्षा का सरोकार कर सकेंगे। इसलिए हमारे यहाँ घोषणा की है एतद् देशे प्रसूतस्य सकाशाद जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षरेण पृथव्याम शर्माना। इट इज मी इन इंडिविजुअल। क्यों? कि ईच इंडिविजुअल इज पोटेंशियली डिवाइन, ईच इंडिविजुअल इज मेड इंडिविजुअल बाय द गॉड। हमको एक ईश्वर ने हमको एक विशेष कृति बनाकर इसमें भेजा है, मुझे किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वन हैज टू बी ओरिजिनल। एक बहुत बड़ा क्राइसिस है ओरिजिनलिटी ना होने का क्राइसिस है, बिकॉज आई एम बॉर्न इंडिविजुअल, आई हैव गॉट माय ओन फिंगरप्रिंट्स व्हिच वाज नेवर बिफोर, व्हिच विल नेवर आफ्टर। अतः हम सब लोग, चूंकि यहाँ पर शिक्षा जगत के सभी घटक यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सब लोग ये चुनौती स्वीकार करें कि शिक्षा जगत के लिए जो ऋग्वेद के कवि की प्रार्थना थी तमसो मां ज्योतिर्गमय, उसको इसी जीवन में और हम लोग साक्षात कर सकेंगे। क्योंकि जहाँ सच्ची प्रार्थना है वहाँ पाप की परछाई नहीं है, जहाँ आशा के गीत हैं वहाँ अवसाद नैराश्य का स्थान नहीं है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग उदात्त लक्ष्यों के वटवृक्ष अपने जीवन में बो दें, जिसकी जड़ें शरीर मन बुद्धि से होते आत्मा तक पहुँचे, तब सयस ही अनायास ही चतुष्पुरुषार्थ को, जिसको हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष कहते हैं, उसको एक गति प्राप्त होगी। तो इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने युवाओं के अंदर आज जो कॉन्फिडेंस पैदा करें, उनके अपनी क्षमताओं के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, हमारी जो संस्कृति है उसके प्रति उसके अगाध प्रेम हो, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो पूर्वज हैं उनसे और हम लोग आत्मसात कर सकें, उस बात को कर सकें, ऐसे युवाओं को करना होगा। और तब उसका स्वाभाविक स्फुरण होगा। आज जो दिक्कतें आ रही हैं कुछ और प्रकार से आ रही हैं, तब उसका स्वाभाविक स्फुरण होगा। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तत्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशाई। और जब ये बात सामने आएगी तब हम लोग वास्तव में अर्थकारी जीवन को, अर्थकारी शिक्षा की जो मैं बात कर रहा था, उसको अर्थ दे सकेंगे, अभिप्राय दे सकेंगे। और वो अभिप्राय होगा ईशावास्यम सर्वमिदं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध कश्चित् धनम। और तब हमारा चिंतन व्यष्टिगत न होकर के सृष्टिगत हो जाएगा, तो मेरा चिंतन लोकल न होकर के ग्लोबल हो जाएगा। और तब हम लोग वास्तव में इंस्टीट्यूशंस में और पैकेजेस की बात नहीं करेंगे, यूसेजेस की बात करेंगे कि ईच इंडिविजुअल को ईश्वर की इस प्रकृति में कैसे और ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए कि इस प्रकृति के संरक्षण में, इस प्रकृति के उपभोग में, उपयोग में वो अपने को एक इंस्ट्रूमेंट बना सके। और वो इंस्ट्रूमेंट जब बनेगा तब जा कर के वो और इस प्रकृति में आगे आ सकेगा। मैं एक बात बस लास्ट बात एक और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो चूंकि इंजीनियरिंग कॉलेज था पहले और दूसरे भी इंजीनियरिंग की बात आ रही, ये कहीं ना समझा जाए कि जिस
भाव विचार और शिक्षा जगत की यात्रा की मैं बात कर रहा था, उसमें कहीं पर प्रोफेशनल एजुकेशन को नहीं था। एक छांदोग्य उपनिषद का उदाहरण देता हूँ। नारद जो हैं शौनकादिक ऋषियों से पूछते हैं कि मैंने सब कुछ कर लिया, मैं शब्दविद हूँ, यंत्रविद हूँ, लेकिन मंत्रविद नहीं हूँ। मेरा मन इन सबको प्राप्त करने के बावजूद भी अस्थिर है, अशांत है, मुझे कुछ शिक्षा दीजिए। शौनकादिक ऋषि, आप सब लोग जानते हैं इस बारे में, शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि अच्छा मैं शिक्षा दूंगा, लेकिन ये बताएं कि आपने क्या अध्ययन किया है। और उनके अध्ययन की जो सूची है उसमें 37 विषयों का नाम लिखा है। पहला विषय जरूर प्रस्थानत्रयी है, लेकिन 36 अन्य विषय हैं जिसमें वो सारे विषय हैं जिन विषयों को आज हम कल्पना कर सकते हैं। तो हिंदू संस्कृति और जिस भारतीय शिक्षा विचार की जो मैं बात कर रहा था अभी तक, जो एनईपी ने हमारे सामने लेकर के आया है, 1835 से लेकर के और 9 नवंबर 2019 तक जो कुछ था ऐसा ही है। लेकिन नवंबर 2019 के बाद हमारी जो दृष्टि बदली है, आउटलुक बदला है, उसने ट्रेमेंडस चेंज लेकर के आ गया है। जीवन के अंदर जो भारतीय विचार साधना है, उस विचार साधना के जो यदि हम लोग उस पर शोध करेंगे, हमारे पास जो उपलब्ध डाटा है, उपलब्ध सूचना है, उन पर शोध करेंगे, तो वास्तव में हम लोग पुनः भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। हम सब लोग इंसान जेसी बोस जी का उदाहरण है, जिन्होंने भारतीय विचार से लिया, संवेदना हमारे अंदर होती है, हम लोग संप्रेषण कर सकते हैं, उससे बेतार का जो है आविष्कार हुआ। फिर उन्होंने और कुछ आगे की बात कही, संवेदना की बात करी, पौधों में संवेदना की बात कही, उससे कितना बड़ा प्लेथोरा ऑफ रिसर्च खुला। उसके बाद वो बात कर रहे थे कि मेटल्स में भी संवेदना होती है, वो अभी छूटा हुआ है। ऐसे बहुत सारी और भारतीय जीवन की समस्याएं हैं जिनको लेकर के हम लोग शोध करेंगे, तो उसमें अवश्यंभावी है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट भी होगा, इनोवेशन भी होगा। आवश्यकता इस बात की है कि उच्च शिक्षा में हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग को लाएं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को लाएं, लेकिन अपनी सभ्यता संस्कृति को इंटैक्ट रखते हुए। आप सब लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। Thank you, Professor Saab, for this enlightening presentation. Taking the program forward, ladies and gentlemen, it's with great pleasure and excitement that I welcome you to today's motivational session by Mr. Shiv Khera ji. He is a man who does not need any introduction, a renowned author, educator, business consultant, and a much sought after speaker. He inspires and encourages individuals to realize their true potential. He has taken his dynamic personal message to opposite sides of the globe, from the US to Singapore. His 40 years of research and understanding has put millions on the path of growth and fulfillment. So going forward, I request all of you to please watch a small AV of Mr. Shiv Khera ji. May I request the AV, please? Mr. Shiv Khera is the founder of Qualified Learning Systems Incorporated, USA. An author, educator, and business consultant, he is a much sought after speaker. He inspires and informs people, helping them to realize their true potential. He has taken his dynamic personal messages to opposite sides of the globe, from the US to Singapore. His 30 years of understanding and experience has helped people on the path of personal growth and fulfillment. He has been recognized by the Round Table Foundation, honored by Alliance International and Rotary International. Mr. Shiv Khera's client list includes, among others, Lufthansa, Motorola, Nestle, Philips, Gillette, Hewlett-Packard, Carrier, IBM, Ericsson, General Motors, Johnson & Johnson, HSBC, and many more. He has appeared on numerous radio and television shows. Mr. Shiv Khera is also the author of the international bestseller book, You Can Win, in 16 languages. His other books are on their way to creating new records. Tens of thousands have benefited from his dynamic workshops in 17 countries, and over 1 million people have heard him as a keynote speaker.
His trademark is winners don't do different things. They do things differently. So without much further ado, please join me in extending a warm welcome and give a round of applause to Mr. Shiv Khera ji. Thank you very much. Sir, I'm honored to see you. I was in Dehradun about 2 weeks ago and I had met many people and they asked, have you heard our governor? I said, no. Have you seen him? Have you met him? I said, never. He said, you missed something a lot in your life because he's a very powerful, motivational speaker. So, sir, I'm here to listen to you all the way. Grateful to you. Thank you, sir. Mr. Jain, Dr. Jain, thank you, sir. Honorable Mr. Rana, all the dignitaries here. Folks, there was some gentleman up there who said, I'm confused about something. Just on the lighter side, a young boy went to his father and said, Dad, I'm confused. And he said, son, what's the matter? And the boy said, Dad, you keep saying God created us, but mother keeps saying our ancestors were monkeys. What's the truth? He said, son, we're both telling the truth. She's talking to her side of the family, I'm talking to my side of the family. So anyway, we are both talking. Confusion is over, sir. All right. Folks, major question to all of you is, whenever we see a success story or a failure story, there are people behind it. How many agree with that? Please raise your hand. Everybody, if you agree with it, please raise your hand. Okay, incorrect answer. Folks, keep in mind, people are not assets. Only good people are assets, rest are all liabilities. I repeat one more time. Only, and you rightly said, sir, fundamentals, only good people are assets, rest are all liabilities. And goodness must be created, evil happens. राणा जी आपने बहुत अच्छी बात की, भगवत गीता की एक याद आई मुझे बात। कहते हैं जहाँ बारिश नहीं होती फसल खराब हो जाती है, जहाँ संस्कार नहीं होते नस्ल खराब हो जाती है। साहब वहाँ पर नस्ल खत्म हो जाती है, फिनिश, नस्ल खत्म, zero. So the bottom line is, goodness must be cultivated. Sir, phone band kar diye sab. Could I request all of you to kindly switch off your mobile, please? Kindly switch off your mobile. Folks, if I keep my mobile on, would it be courteous to you people? Yes, no? Hello? Can we practice courtesy both sides, please? Kindly switch off, please. In our office, very clear instructions are, nobody in our conference room brings their mobile, including me. We had a member of parliament come the other day. I said, sir, kindly leave your mobile outside. Tell me, if you came in and if my mobile kept fiddling around, is it courteous to you? Yes, no? Okay, 2, do I have a right to waste your time? No. So I commit I will not waste your time, but I will not let you waste my time either. Put your mobile, my mobile is out too. I will not let you waste my time either. So very clear. So kindly switch off, please, for at least for the few minutes that we are here. So goodness must be cultivated, evil happens. This is like a farmer, if they want to have a good garden, they must consciously plant good seeds of good fruits and good flowers. Consciously, but weeds, you don't have to plant, they just keep coming. See, after the farmer has planted good seeds, there's a whole army of insects and weeds ready to destroy his hard work. Yes, no? Yes, no? Yes. That's right.
Now the farmer has a choice. Either get destroyed or destroy them. Both cannot live together. Either get destroyed or destroy them. So that means he has to fight. Which means what? Fight is nature's law. Which means if you want to live in peace, be ready to fight. Are you with me? If you're not ready to fight, you don't deserve peace. Don't. A great general once said, it was Patton who said, you don't get freedom by dying for your country. You have to kill the enemy. That's how you get freedom. And what is the enemy in our society that is destroying us? We need to figure that out. Folks, fight is nature's law. Not fighting is not a choice. Within our body, we have a doctor here. Within our body, sir, we have white cells and red cells. Yes, sir. Is that right? What is the function of the white cells, sir? To fight infection. That means within our body right now, there is a fight going on here. Every day, our body releases millions of cancerous cells and millions of immunity cells. Whichever is stronger wins. If cancer is stronger, we die. If immunity cells are stronger, we fight and destroy cancer. There is a fight in our body right now. Are you with me, folks? Yes, no? Okay. That means not fighting is not a choice. Come back. Now, if we have to fight in life, then our objective is not just to fight, but to fight to win. And in order to win, we must be strong. And folks, my new book that is coming up, we need to be strong in 5 areas, and I'm not going to elaborate on it, but just park it somewhere. We need to be strong in 5 different areas. 1, we need to be physically strong. Why? Because physical strength gives us energy, stamina, sustenance. And physical weakness impacts our decision-making process. Folks, you notice one thing, whenever we are physically unwell, the kind of decisions we make, we probably would never make such decisions when we are physically strong. Are you with me, folks? Yes, no? That's right. So 1 is physical strength, 2, mental strength, 3, emotional strength, and 4, financial strength. Financial strength is very crucial. Folks, there are people who say money is not important. I have written my book, You Can Achieve More, which is the new one. People who say money is not important, either they are stupid or they're billionaires. Nobody else says it. Either they're outright stupid or they're billionaires. Some arabpati hai sab. Kehta money is not important. Now I didn't say money is the most important thing, but it is important. And then they say, money does not give you happiness. My question is, does poverty get you happiness? And if I have to be unhappy, Ranaji, I would rather be unhappy with money than without money. Unhappy रहना है तो पैसे के साथ ही रहना है, क्या problem? And very crucial thing is, folks, many times who say money is not important, probably they don't understand what it is about. And many times people say money is the root of all evils.
Not true. Lack of money is the root of all evils. Folks, money is only a medium of exchange. Only a medium of exchange. When I provide you with goods and services, you reward me with money. What's wrong with that? What's wrong with that? And the more goods and services I provide you, the more you reward me with money. What's wrong with that? Folks, money is wonderful. Money is food for the hungry. Money is medicine for the sick. Money is shelter for the homeless. Remember, money is not the root of all evils. It is the love of money which is the root of all evils. Loving money, using people, you got it wrong. Loving people, using money, you got it right. Now, folks, साहब किसी ने बहुत अच्छी बात कही है. Spend your money on the things that money can buy, but spend your time on the things money cannot buy. दोबारा से कहता हूँ. Spend your money on the things that money can buy, but spend your time on the things money just cannot buy. And the most precious things in life, money just cannot buy. Money can buy you, folks, money can buy you a bed, but not sleep. Money can buy you books, but not wisdom. किताबें खरीद देगा सर. Money can buy you a companion, but not a friend. Money can buy you a clock, but not more time. Money can buy you food, but not appetite. See, money can buy you a house, but not a home. Money can buy you a ring, but not a marriage. The most precious things in life, money just cannot buy. Now, why am I sharing all this with you? I'll just come back, part this. This is the money part. So, physically, mentally, emotionally, financially, and finally, we need to be strong spiritually. Are you with me? Spiritually. Very crucial. We need to be strong spiritually. Spiritual is our moral compass. My sahab, abhi, I had Mr. Rajiv Kumar, who's the Vice Chairman of Niti Aayog. Chairman is here. So Mr. Kumar had come to my office. We had lunch last week. We were talking of skill development. अभी सुन रहा था मैं, आधा घंटा स्किल डेवलपमेंट बात हो रही है. तो सब मैं एड्रेस करने गया था to Maulana Azad Medical College. The alumni meet. 1,000 medical doctors had come from all over the world. Again, they were talking of our GDP is going up, GDP is going up, GDP is going up, and skill development. So when they handed me the mic, I said, sir, companies and countries are not built on skills. They are built on character. Are you with me? See, you have a skillful doctor who lacks character. They will do useless surgeries, useless procedures. To them, a sick person is not a patient, but a target. To a skillful lawyer who lacks character, a matter that can be resolved in 5 hearings will take 55 hearings. They will squeeze you.
निचोड़ेगा साहब आपको बैठा. A skillful judge who lacks character will give you judgments, no justice. 500 साल लगा दिए राम मंदिर लटकाने में. जज को समझ नहीं है क्या वो? They don't have the guts. जनरल साहब से पूछिए, बंदूक नहीं गोली मारती, इंसान मारता है. It is not a weapon that shoots. It is you have the heart to shoot. A skillful IAS, IPS officer who lacks character will become gunda and mafia himself. वही माफिया बन जाएगा. A skillful politician who lacks character वही रावण बन जाएगा, दूसरे की बीबी को उठा ले जाएगा. साहब, the key is charitra nirman. You see, without that, it will not work. दोबारा से कहता हूं, भगवत गीता में लिखा है साहब, बारिश नहीं होगी तो फसल खत्म हो जाएगी, और संस्कार नहीं होंगे तो नस्ल खत्म हो जाएगी. Bottom line really it is. Now coming back, Mercedes is a client of ours, and one of the senior executives wrote an article which said, with the speed of change, the way things are happening today, products are getting obsolete the day they're getting launched. And up the universities mein ho yahan pe, knowledge is getting obsolete within 2 to 3 years. Go check out engineering graduates, medical graduates. By the time they get to the 4th and the 5th year, what they learned the first year became obsolete. Now, it has literally become a cliche. The only constant is change. Now, with this kind of a scenario, either we have a great opportunity for those who are prepared, or we are in deep trouble. I repeat, either we are in deep trouble or there's a great opportunity for those who are prepared. You agree with that, folks? Yes, no? Hello? Okay. Many people raise their hand. But my question to you is, how do you prepare for the unknown? How do you prepare for the unknown? So I wrote an article which was published in one of the largest HR magazines in Singapore, and I'm sending it to New York Times for publication. I wrote in that, is there anything else in this world that is constant other than change? And if there is, why not master the constants? So I wrote in that going into the future, the only people who will succeed in life are those who master 3 skills that are constant, they have never changed, and they will never change. And they are what? 3 skills. 1, people skills. Number 2, persuasion skills. Number 3, prioritizing skills. These 3 skills, they have never changed, they will never change. Why people skills, folks? Go check out all over the world. We don't have business problems. We have people problems. And when we take care of our people problems, most of our business problems are automatically resolved. 2, all over the world, we are hired for our skills, but we are fired for our behavior. Yes, no? Anywhere, we are hired for our skills, but we are fired for our behavior. Not only as an employer-employee, but even as a vendor, even as a consultant, we are hired for our skills, but we are fired for our
behavior. And 3, you notice one thing in life, folks. The lower a person is in life, 90% of the time goes in technical skills, less than 10% people skills. And higher you go up, guess what happens? It just, what? Reverses. That means technology and technicians, you can always buy with money. But the wealthiest person in the world must build and create relationships. हिंदी में कहावत है साहब, कुत्ता खरीद सकते हो लेकिन पूंछ नहीं हिलवा सकते साहब. Bottom line, कल जो सज्जन आए थे मेरे को, अभी मेरे को भी इन्होंने किसी ने डॉक्टर बोला, तो मैं कहता हूँ साहब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, though I've been offered 3 times a honorary doctorate and I have refused. तो मेरे को लोग कहते हैं कि भाई क्यों रिफ्यूज कर दिया आपने? प्रेस्टीज बढ़ जाती है, डॉक्टर लगा देते हो नाम के ऊपर, आपका नाम बढ़ जाता है, भाव बढ़ जाता है. मैंने कहा यार मुंह खोलते हो औकात मालूम हो जाती है. मुंह खोलते हो जो सर गलत बोल रहे हो, मुंह खोलते हो औकात मालूम हो जाती है सर. Folks, I come from a business family. We had coal mines in India, close to 1,000 people working. My grandparents got dislodged from during the partition period. My grandfather went to Bihar, started life on a bicycle, lost everything. And eventually he became one of the largest mine owners in the country. And we had close to 1,000 people working for us. Now, I didn't create the mines, I inherited them. And the mines got nationalized, the government took over. And we literally came on the street. Street means street. Some people had money, our family did not, because my father had died when I was in college. And we were left, the liability and the assets were gone. And right immediately after college, I got married. And a year later, my daughter was born. And I sold some of the last piece of my mother's jewelry to get released from the hospital. I did not have $10 to buy milk that night. I tried my hands on 3 businesses with no money, and I failed in all. Finally, November 13, 1975, I left India, went to Canada initially, then to US. I started life with a bucket in my hand, washing cars door to door for about 1.5 to 2 years. And totally by accident, I got into selling life insurance. Folks, hear this carefully. Selling life insurance was the best thing that ever happened to me in my life. Why do I share that? Folks, one of the toughest things to sell in the world is life insurance. You see, selling clothes, cars, books, house, things, other things, it's much easier. You know why? You can touch and feel and touch and feel and touch and feel. Life insurance, you can't touch and feel. After you're gone, something will happen. Nobody knows what will happen. Toughest sale. So that means selling life insurance is a rejection business. I had to see 30 people before I got one application. That means 29 people rejected me. See, folks, sadly, in our schools and colleges and parents, we are teaching our kids only 2 words. Succeed and win, succeed and win, succeed and win, succeed and win. We never teach them how to lose and how to fail. But failing and losing is a reality. Show me one person here who has not failed in life any time. Show me anybody who's not lost sometimes. But you see, we've never taught them how to fail and how to lose. And failing is a reality. But when they fail, since they don't know how to handle it, they go into deep depressions. Look at this, what's going on today. They commit suicides. They don't know how to handle it.
So after I got into selling life insurance, within 90 days, my manager called me back to fire me for non-performance. He said to me, he said, Shiv, I've been in this life insurance business 35 years. And he said, I've seen some slow starts in my life, but I've never seen one like you. And then he said to me, don't come back tomorrow. You're fired. I said, wait a minute, Joe. Before you fire me, at least hear me out. I'm not an educated person. I'm not a doctor, engineer, attorney, accountant. I'm a BCom 3rd division, failed my 10th. That's my academics. I said, how do you expect performance out of me? And he said, what do you mean? I said, Joe, even in school, I wasn't the brightest kid. I was the backbencher troubling the front benchers. And in my 8th grade, out of 6 or 7 subjects, sir, I failed in all except one. So my principal called me and said, Shiv, you're paying too much attention on one subject. Out of 28 kids, I was number 27 because the 28 was absent. No kidding. I still have the report card. I told my wife, my manager, I said, Joe, I got a handicap. That day, somebody spoke very harshly to me, and I'm glad he did. And later on I realized it was not anger, it was concern. And he shouted at me. He said, you shut up and listen to me. You shut up and listen to me. And he says to me, you don't have a handicap. You have a bad attitude. And he said to me, he said, it is people like you who not only ruin their own lives, but they also ruin their family's life too. Then he said, do you know who has a handicap in life? He said, the doctor, engineer, attorney, accountant, they all have handicaps. I said, boy, I never heard that one. How do they have handicaps? He said, go check out all over the world. It is generally true. They all have chosen their field. They are stuck. They all have chosen the field. सबने अपना क्षेत्र चुन लिया है. They are stuck. Generally true. And he says to me, you haven't chosen your field. Don't you see the world is open to you? I said, Joe, I never thought from that point of view. So he says to me, now that you're fired, he said, you got all the time to think. He said, leave my office. Folks, I left his office about 47 years ago. That evening, there was a program by Dr. Norman Vincent Peale, the man who wrote the book Power of Positive Thinking. You heard the name, folks? Yes, no? Okay. I paid $39, which I didn't have. Dr. Peale came. He was 85 years of age. जैन साहब कद आपके इतना ही होगा, इतना सा कद था. 5 फुट 1 इंच होगा, आपका थोड़ा ज्यादा है. With shoes maybe 5'2". लेकिन साहब जिस उत्साह से उस दिन डॉक्टर पील बोले, साहब उस दिन से मैंने कद की परिभाषा बदल दी है साहब. जिंदगी में इंसान का कद कभी गर्दन से नीचे नहीं नापा जाता, हमेशा गर्दन से ऊपर नापा जाता है साहब. And he looked at the audience and he said, with such confidence, but that confidence had humility. Because any confidence that lacks humility is called arrogance, yes, no? And he said, you people appear so cool, calm, comfortable, it appears nobody has a problem here. And then he asked, does anybody have a problem? Well, who doesn't have a problem? So everybody raised their hand. Then he asked, how many people would like to get rid of the problem? Again, everybody raised their hand. Then he said, while I was coming here, I came across a place where I saw, hello,
Why, see, he said, while I was coming here, I came across a place where I saw some people lying down, all relaxed, comfortable, totally stretched out. They have no problem whatsoever. How many people would like to know where that place is? Again, everybody raised their hand. Then Dr. Peel said, 2 blocks away from here, there is a cemetery. There are people lying there, all stretched out, comfortable, totally relaxed. They have no problem whatsoever. Then he asked, how many people would like to get rid of the problem? Nobody raised their hand, everybody put their hand in the pocket. Then Dr. Peel said, remember, problem is a sign of life. So long as we are alive, we shall have problems. The day we don't have problem, we'd be dead. And he said, when you're running short of problems, watch out, he might be calling you. Quickly. And then Dr. Peel on that day gave a prayer, which in my opinion is the gist of life. And since the last 47 years, I have never left my home without this prayer. And it goes this way. God grant me the serenity to accept the things that I cannot change, and courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference what I can and what I. परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं क्या बदल सकता हूं और मैं क्या नहीं बदल सकता। Folks, अगर आप इस छोटी सी प्रार्थना को एनालाइज करें तो आप देखिएगा, God grant me the serenity to accept the things that I cannot change. अब बात ये है, can we change everything in this world to suit ourselves the way we want it? Answer is no. Can we mold and manipulate everything to suit our? Answer is no. There are many things beyond, such as, I didn't choose my parents, neither did you. I didn't decide when I was going to be born, neither did you. If this is my height, the color of my skin, there's nothing I can do. Granted, sometimes people are born deformed. And sometimes bad things do happen to good people for no fault of their own. What wrong did they do? It says, what I cannot change, let me accept it graciously. Because many times in life, we keep fighting the things we just cannot change. And we bring stress into our lives. We become paralyzed and we become unproductive. So it says, what I cannot change, let me accept it graciously. And if I can't change, then give me the courage to do it, and wisdom to know the difference what I can and what I cannot. So साहब, मैंने जब अपनी किताब लिखी, नई वाली, which was launched in London 2 or 3 years ago, I took this thought 2 steps forward and I wrote in that life is full of choices and life is full of compromises. Seems like a contradiction, but not really. How is life full of choices? See folks, if I ill-treat you, I have chosen to be ill-treated, haven't I? If I treat you with discourtesy, I have chosen to be treated with discourtesy, haven't I? See, if I exercise every day, I've chosen to invite good health, haven't I? And if I eat too much every day, I've chosen to be obese, haven't I? And keep in mind, if I drink and drive, I've chosen to invite an accident, haven't I? And if I tell lies, I've chosen to lose my credibility, haven't I? Hello? That's right. See folks, life is full of choices. Now, important thing is, we are all free to the point of choice. But after we make our choices, the choice controls the chooser, we have no more choice. It's all over. ध्यान देता हूं साहब मैं, we are all free to the point of choice, but after we make our choices, the choice
controls the chooser, we have no more choice. Now, how is life full of compromises? As somebody said, well, in life, we cannot choose the cards that are dealt to us. What we can choose how we play the game. साहब कई बारी लोग मेरे से पूछते हैं कि जो लोग सफल होते हैं क्या गलतियां नहीं करते? And people who fail in life, don't they do positive things in life? And my answer is that people who succeed, they do make mistakes. But remember, making a mistake once in a while does not bring failure. Repeating the same mistake again and again is what brings failure. Folks, are you with me? And doing something positive once in a while does not bring success either. Repeating the same positive behavior again and again is what brings success. So what is success? Series of positive decisions in life is called success. And series of negative decisions in life is called failure. Now, after I attended Dr. Peel's program, I went back to my manager. And I said, Joe, don't fire me today. Give me one more shot. Give me one more shot. Because if you fire me today, I don't know where to go. And the only place I know where to go is go back to washing cars. And I said, I don't want to do that anymore. I got a little daughter. I make one commitment. I will not let you down because of my effort. But please withdraw the papers. He said to me, he said, Shiv, that's not your small one, that's your big one. And he said, I'll let you stay here only if you make a commitment not to me, but to yourself. Folks, that day I made a commitment. And that was one of the turning points in my life. And don't we all have some turning points? Yes, no. And he would do the papers. And that year I went ahead, sold close to $1 million. Next year, 3 million. Year after, 5 million. Moved on to the US. Got into 3 businesses. I bought out a company out of California in 1984 and started the New Jersey operation with no clients. And I sold my company with close to 500 clients for a decent sum. Now, why do I share my life with you? For a few reasons. Number one, I kept failing all my life and kept blaming the whole world for my failure, not realizing that I was my own biggest problem. Nothing changed outside. Something changed inside here, and the direction of my life changed. Folks, let me ask you, many times in life, aren't we our own biggest problem? Yes, no. Number two. Second lesson I learned was, when my manager said to me, you shut up and listen to me. That taught me one lesson. Sir, you are all leaders here. It taught me one major lesson in life. That sometimes in life, you got to be unkind to be kind. Hello. Sometimes in life, you got to be unkind to be kind. Leadership is not a popularity contest. And third lesson was, I was on 100% commission. If I didn't sell, I wouldn't get any money, sir. And I had no money. But I saw there were some people in my company who were getting salaries and they were not doing their job. सब वहां पे मैंने सीखा एक फर्क. There is a big difference between making money versus earning money. Making money is criminal, earning money is spiritual. Are you with me? I repeat, making money is criminal, earning money is spiritual. So what is the difference? Difference is, when we earn money, we put our energy and ethics behind.
strategy and ethics behind. And sadly today, most people want to only make money. And sadly also, I heard the entrepreneurship people are just looking to make a quick buck. They don't even give a damn how they do it. And that is sad. A survey was conducted by Gallup in the US, it's a global survey, which said 63% of people who go to work, they're disengaged. Means they don't do their job. 63%. An additional 24% are actively disengaged, which means they make sure that others also don't do their job. दूसरे को भी नहीं काम करने देते. That leaves only 13% of people who go to work actually do work. Only 13% of people who go to work actually do work. Folks, let me ask you, is this not an integrity issue? Hello? Big time integrity issue. साहब किसी ने बात कही है कि चारों वेद अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, अगर आपको तीन चीज आ गई, समझदारी, वफादारी, ईमानदारी, आपने वेद पढ़ लिए पूरे साहब. Bottom line is, today with social media the way it is, people when they go to work, they spend 3-4 hours per day. Sir, I'm sure you must have seen 3-4 hours a day when they go to work, they spend on the personal social media. Tell me, is that what we're getting paid for? Is that what we're getting paid for? साहब आपके जेब से कोई आपका बटुआ निकाल ले, what do you call that person? A thief. And when we do all these things, what are we? We are no different. साहब कौन सा कॉलेज स्कूल all over the world, show me, which is teaching all this which I've talked in the last 45 minutes? None. My kids have gone through US and they've done their masters there. I have the dean of James Cook University of Australia attend a program. He said, Mr. Khera, I've been in education for 35 years. Nobody's teaching all this stuff here. And I just had the IIM director from Nagpur. He came into our office and he has signed up a collaboration agreement with them. It is mandatory for every IIM Nagpur MBA student to go through a leadership program. Not optional, mandatory now. So everybody's going through. This is what we are talking here in terms of nation building. This is what we're talking of nation building. साहब मैं टाइम काफ़ी हो गया, मैं पहले देख लिया भैया, मेरे को मालूम मैं बस एक चीज़ मैं शेयर करूँगा आपसे, क्योंकि आपने फंडामेंटल से बात की एंड एंटरप्रेन्योरशिप की. About 45 years ago, I heard this story in the US. There were some people working in the hot sun. And a limousine came by and called one of the persons. So he left work, came inside. Inside the limousine was the president of the company. So they exchanged the pleasantries, had cold water, and he went back to work. So now all his colleagues were impressed. You mean you know this guy in the limousine? He's the president of the company. He said, not only do I know him, but he and I joined the company 25 years ago. On the same day, not only on the same day, but also the same position. Now everybody was shocked. If you join the same position, same day, how come he's the president and you are still working as a laborer in the hot sun? Saab, jo jawab usne diya, if this is one take home that you have, he said, look, 25 years ago, he started working for the company and I started working for $1.28 an hour. सब मैं $2.28 के लिए काम कर रहा था. He started working for the company. साहब ये जो कहानी मैंने आपको अभी सुनाई है, this is typically the story of, literally the story of Jack Welch, the man who was GE guy. लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि ऐसी चीज अमेरिका में हो सकती है, इंडिया में नहीं हो सकती. अब इसको, ये लास्ट चीज को मैं उदाहरण करके बंद करता हूं इसको. I
met a person who took an early retirement from the defense services and started his own business, and within a few years started doing close to 1,000 crore turnover. So one day a friend of his who had also taken early retirement, he was looking for a job. So he came to the owner and said, "Can I work for you?" He said, "Of course, we've been colleagues for 30 years. Why not?" So he started working. So one day the office closed, everybody left. So the man came to the owner and said, "You remember? 30 years ago, we both joined the services together on the same day. You remember?" He said, "Yeah, I remember." And he said, "You remember? You were getting $1,000, I was getting $1,000. You remember?" He said, "Yeah, I remember." And he said, "You remember that you were an employee then, I was an employee then. You remember?" He said, "Yeah, I remember." He said, "Look at this. 30 years later, I'm still an employee. And you are the owner of a company worth 1,000 crores. Isn't this luck?" Folks, is this luck? Hello? Yes, no? Okay. Folks, the answer the man gave, I repeat, the answer the man gave, if this is the only take-home you have out of this morning, it would have paid this program 1,000,000 times over. Here is what the man replied. He said, "I want to remind you of an incident which took place 30 years ago. He said, we had a long day. We walked 2 miles in the evening from office to the barracks to go to sleep. It was 9:30. And he said, it occurred to me that, we forgot to switch the light and the fan in the office. What did you say at that time? You said to me, haven't we worked hard all day long? Who's going to go back? If we go back 2 miles, come back 2 miles, that is 10:30. And you told me, what's the big deal? कौन सी बड़ी बात है? एक ही तो लाइट है। और कौन सी बड़ी बात है भाई? एक ही तो पंखा है। And you said to me, कौन सी बड़ी बात है? एक ही रात में कितनी बिजली चली जाती है। And then you said to me, अरे भैया अपना थोड़ी है सरकारी है। अपना थोड़ी है सरकारी है। तूने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तू सोने चला गया। कहता ध्यान से सुन। मैं वापस गया और बिजली पंखा बंद करके आ गया। अब ध्यान से सुन, कहता है 30 साल पहले हम दोनों ने फौज ज्वाइन की थी इकट्ठे, सेम डे बुलेट। बिल्कुल ठीक कहा तूने। तेरे को भी 1000 रुपए मिलते थे, मेरे को भी 1000 रुपए मिलते थे। बिल्कुल ठीक कहा तूने। तू तभी नौकर था, आज भी नौकर है। बिल्कुल ठीक कहा तूने। अब ध्यान से सुन, फर्क ये है 30 साल पहले उस रात को भी मैं मालिक था, आज भी मालिक हूं। और जैसी सोच तेरी है, तू मरेगा भी नौकरी, तू मरेगा भी नौकर। साहब, मैं आपसे छोटी सी एक बात कहना चाहूंगा, वो ये है, ए paycheck does not decide who is the owner, who is the employee. It is the person who takes accountability and responsibility and ownership, that's the owner. भगत सिंह ने मुल्क का कहा था मेरा मुल्क है, नेताजी ने कहा था मेरा मुल्क है। किसने उनको मलकियत दी? नहीं थी साहब। मलकियत कभी देने से नहीं आती इस तरीके से। We have to start thinking as an owner. And sir, with those words, I'll stop because I had 2 other things, but another day we will make it. But with your permission, sir, may I just offer you my 2 books? I would be happy to sign them off to you, sir. I'll sign them off to you, sir. I'll be honored. And
Sir, just one little thing. We have exceeded now over 10 million copies. It's, so we created in the House of Lords this memento. It's a hard jewelry box with a magnetic lid with 2 bone china mugs you can win. It's right here. And after you take them out, sir, this is all handcrafted with foam for protection for jewelry. So I would request you, sir, kindly have your tea, coffee in these mugs, sir. Thank you, sir. I'm grateful to you, sir. Thank you, sir. I'm honored. And Jain Sahib ek kitab, and I'll just leave one with you, sir. I'll just pass this on to you. Sir, राणा जी आपको भी मैं अपनी दे देता हूँ किताब. हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ेंगे सर? दोनों. एक मिलेगी सर, दो नहीं मिलेगी. अगेन मिलेगी सर. एंड मैं सर आपको एक और चीज देता हूँ. I would like to, राणा जी, ये I'll just hand over to you something. This is a success manual. If you read life histories of people who have succeeded well, they maintain a journal. They maintain a journal. And journal is not like a diary, you use it and throw it off. So have you used a journal, sir? You're a journal yourself. I'm talking journal. But let me share with you. मैं एक और मंगाता हूँ साहब, एक सर को मैं देता हूँ इनको. ये this is called a success manual. You fill this up. This somebody told me, he said, Shiv, just invest 10 minutes a day in yourself every day for 41 days. Your life will change forever. 10 minutes a day, only 10 minutes, and your life will change. So, filling the journal is a process of reflection, and we reflect. Reflection is a process of learning, and when we reflect, we review our actions and intentions. So, इनके 5-6 पेजेस हैं. बेटा एक सर के लिए जर्नल बताइए, सर के लिए. Okay, just get one more journal. हाँ मैं सर. And sir, this is one. It talks of a problem-solving formula, because many people talk of problems. We need to talk of solutions. And then it says just fill up only. It's a fill in the blank. Only 4 lines. Only 4 lines. It says here on top, today I feel. Write your true feelings. How do you feel? I feel glad, sad, bad, whatever. Write truths here. Number 2, today I have learned. What have I learned today? Have I learned anything? If yes, what? If not, why not? Folks, people who are succeeding in life, their way of calculation time is very different. If I've learned something today, I've gained a day. If I've not learned anything today, I've lost a day. Okay. Third, today I'm proud of. What am I proud of? Am I proud of anything? If yes, what? If not, why not? And lastly, today I commit to improve. Every day, at night, you fill this up. Today I commit to improve. Let me ask you, sir, if you fill this up for 41 days, how many commitments have you made? Tell me. If you fill this every night, in 41 days, how many commitments have you made? 41. Incorrect. Incorrect answer. Folks, you find after 5-6 days, you start repeating the same thing over and over again. You know why? There are only 4 or 5 bad habits that are pulling us down. That's all, sir. सिर्फ 4-5 पूरे habits हैं जो हमारे को नीचे गिराते हैं, सर. खाली उनको हटाना और कुछ नहीं. That's all. So, sir, I have this one for you, sir. Oops. Sir, honored, sir. Thank you, sir. Grateful to you. Those words, I'll hand over the mic to you. Thank you so much, Shiv Khera ji. That was very inspiring,
very motivating, and I'm sure all our guests feel the same. So a very huge round of applause for Shiv Khera ji for this very motivating session. And Shiv Khera ji, मैं आपसे कह सकती हूँ, जिसने भी आपको बताया महामहिम की ओजस्वी वाणी के बारे में, बिल्कुल सही कहा है। एक महीना पहले ही मैं भी उसका लाभ ले चुकी हूँ और हम सब अभी लेंगे। And on that note, ladies and gentlemen, I would now request our Pro-Chancellor, Shri Shreyansh Jain ji, to come onto the stage to introduce and welcome our chief guest, His Excellency Lieutenant General Gurmit Singh ji. Educators and distinguished guests, once again, I welcome all of you to Bharat Gyan Samagam 2024 at COER University, where minds converge to envision the future of education for the next generation. On this special occasion, we are honored to host 50 plus Vice Chancellors representing universities from 20 plus states, 3 countries, over 500 principals representing schools from over 26 states and 2 countries. Today, we are lucky to have among us our Honorable Chief Guest, Lieutenant General Gurmit Singh, a flagship of knowledge and a very disciplined person among us. Lieutenant General Gurmit Singh, who is known for his military deftness and proficiency in the Indian Army, is presently bedecking the designation of Governor of Uttarakhand. His personality is a combination of bravery, courage, kindness, compassion, simplicity, and honesty. An expert in taking tough decisions in his military career, he is broad-minded, soft in spirit, heart, and thoughts. He has compassion, love, and affection for all. His personality and thinking are based on the path laid down by Guru Nanak Dev Ji and Guru Gobind Singh Ji, such Khandvas Nirankar and Nishchay Kar Apni Jeet Karo. Belonging to the most sacred place in Sikh religion, the city of Amritsar, he was formerly Deputy Chief of Army Staff of the Indian Army. He was also Chief Executive Patron of the Rashtriya Sainik Sanstha. He has been participating in TV media on Nation First Focus as Jai Hind General and as a defense expert. He has been awarded with 4 presidential awards and 2 commendations by the Chief of Army Staff during his nearly 40 years of service in the Army. He has received Param Vashist Seva Medal, Uttam Yudh Seva Medal, Ati Vishist Seva Medal, and Vashist Seva Medal. Please, ladies and gentlemen, join me in welcoming this enigmatic person to COER University and Bharat Gyan Samagam. Welcome, Hon'ble Governor, sir. We will now felicitate our worthy educators for their contribution in the field of education. I would also request our Chancellor, sir, to come onto the stage. थोड़ा पीछे हो गया भैया, पीछे आ जाओ, ये कैन पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। Thank you, sir. And now I'm going to take the names of the awardees and I'll request them to quickly come onto the stage to receive their award. And the first is, these awards are for the principals, vice chancellors and innovative thinkers in the category. And the first one is for Outstanding Principal Award to GP Captain Sandeep Mohan, former Principal, Army School, Sainik School, Air Force School, Chandigarh. Please welcome GP Captain Sandeep Mohan. Ladies and gentlemen, please give a round of applause. And
And the next in line is Innovative Thinker Award to Dr. Ankush Mittal, Adjunct Professor, IIT Mandi, Himachal Pradesh. Ladies and gentlemen, please welcome. I request the audience to please keep on giving your warm round of applause. Thank you. And the next name is Outstanding Vice Chancellor Award to Dr. Aruna Palta, Vice Chancellor, Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Chhattisgarh. Ladies and gentlemen, please welcome. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And now I would request the Honorable Chief Guest, Lieutenant General Gurmit Singh Ji, to share his valuable views with all of us. Thank you. जय हिंद। जय हिंद। आज सचमुच एक अलग ही क्षण लग रहा है। It's actually a different environment. I think what we are respecting is our desire to learn, our desire to research, and our desire to change. आज जो इस ज्ञान विज्ञान के समागम का जो समारोह है, इसके अंदर में हम सब ने मिलकर जो सोच विचार और धारणा है, मुझे तो इतना खुशी हो रही है कि आज यहां पर 60 वाइस चांसलर्स, 500 से अधिक प्रिंसिपल्स और 26 स्टेट से जो प्रतिनिधि आए हैं, और सबका बस एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो हायर एजुकेशन है, हमारी जो सेकेंडरी एजुकेशन है, इसकी जो ट्रांजिशन और गैप एनालिसिस में क्या रिक्वायरमेंट है और हम किस प्रकार अपने स्टूडेंट्स को, अपने यूथ को, जो एक्चुअल संसार है जहां पर जॉब्स, कैरियर, भारत का जो भविष्य है उसके लिए कैसे तैयार करें। हम सबके, पूरे राष्ट्र समाज और पूरे जन के हमारे सपने हैं, हमारे संकल्प हैं, और इस चीज में बहुत खुशी होती है कि अभी भारत ने बिल्कुल अपने आत्मा में, हृदय में, मस्तिष्क में क्लियर कर लिया है कि हमारे सपने क्या हैं, हमारे संकल्प क्या हैं। हम 2047 में 100 साल जब आजादी के हो जाएंगे तो हम क्या बनना चाहते हैं। I think this is absolutely clear कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति थी, जो हमारी जड़ें थी, जो
अंदर में एक विश्व गुरु बनने का तत्व था और है, और हमको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए अपने सपनों को संकल्प के रास्ते से सिद्धि तक लेके जाना पड़ेगा, और उस पूरे यात्रा के अंदर में शिक्षा, एजुकेशन, स्किल्स, विजडम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये जो आप यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से, I can feel the vibration here that everyone has got a natural respect for two things. One is for learning, or second is research. And learning is a continuous process. It never finishes. Research भी एक continuous होती है। RE की क्या वैल्यू है रिसर्च के अंदर में? Research actually means that you're searching. पर उससे पहले आप देखते हैं आरी, कितनी बार आरी की वैल्यू क्या है वो भगवान ही तय करता है। ये लर्निंग और रिसर्च अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रिक्टेड है, कभी खत्म नहीं हो सकती है। कहानी पूरी सोच, विचार और धारणा की है। हमारी सोच क्या है, हमारे विचार क्या है, हमारी धारणा क्या है। ये जो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, 500 प्रिंसिपल, 60 वाइस चांसलर, सबके दिल में एक सपना, एक संकल्प है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसकी सोच क्या है, क्या बदलाव हम चाहते हैं। इसके अंदर में स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स का अंश क्या है। इसमें जो हम स्किल की बात कर रहे हैं वो क्या है, किस प्रकार से हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, हमारी विद्या, ज्ञान, वो आधार, वो जड़े, उससे कैसे हम जुड़े। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो मंथन चिंतन करेंगे, the discussion and deliberations that you're going to have, and the suggestions which is going to crop up out of that, जो उससे अमृत होगा, वो हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं शुरू में यहां आया तो वी वर टॉकिंग अबाउट द स्किल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद राणा जी ने इतना सुंदर तरीके से हमारी सभ्यता की जो जड़ है, जो वृक्ष है, जो संकल्प है, जो बड़ा पेड़ भारतवर्ष का है, उसके अंदर में शिक्षा क्या है, परंपरा क्या है। और उसके बाद देखिए प्रभु का खेल, शिव जी की धरती में शिव जी, शिव खेरा ने आकर अपने बातों का जो कहा, आप एक चीज लुक एट द कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉस्मोस, एक ब्रह्मांड की कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी को आप पहचानिए, उस क्वांटम को पहचानिए जो ब्रह्मांड में, जो पूरे इकोसिस्टम में, और इस क्षण में रुड़की के अंदर में एक ही फ्रीक्वेंसी। इन्होंने शिव जी का जो भी ज्ञान होता है वो एक त्रिशूल के रूप में होता है, और इनका जो पुस्तक है वो भी 3 शब्द, यू कैन विन, 3 शब्द में है, और तीनों ही शब्द 3 लेटर में है, YOU, CAN and WIN। और देखिए ये जो यू लिखा है इसमें, गुरु नानक देव जी ने कहा है सब कुछ तेरा। ये जो इंसान, ये जो आत्मा औरों के बारे में सोचती है कि जो भी मैंने ज्ञान हासिल किया है उसको मैं किस प्रकार
प्रभु की धरती में सब कुछ तेरा, सब कुछ तुझको, सरबत को दे दूं। और ये जो वर्ड कैन है ना, कभी कभी लगता है कि इस कैन को इच्छा शक्ति से विल में कैसे बदल दें। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो शब्द विन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है IN। मेरे अंदर क्या है? हर भारतीय के अंदर ब्रह्मांड है। एवरी इंडियन इज ब्लेस्ड। उसकी अंतरात्मा के अंदर में ब्रह्मांड है। और ये जो वर्ड इन है ना, इतना स्ट्रांग है। सबसे पहले तो इंडिया में भी पहले 2 लेटर भी इन ही है। ऐसे कहते हैं यू कैन नेवर विन, अगर उस वर्ड के अंदर में इन ना होता, IN ना होता। यू कैन नेवर बी ए किंग, आप राजा नहीं होते जब तक अंदर में इन नहीं होता। और शिव जी ने बहुत सुंदर, आपने जो भी कहा आखिर में एक बहुत टचिंग सा वर्ड कहा, दैट यू गॉट टू बी काइंड। दया, सेवा, कल्याण, औरों के बारे में सोचना, ये उसी शब्द के आता है, इन से, काइंड। आज सचमुच कहूं तो बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि ये जो शिव जी की सोच है, कहीं ना कहीं ये हमको सबको बता रही है कि हम सबको वी हैव टू डीपली इंट्रोस्पेक्ट, कि किस प्रकार हम अपने शिक्षा के क्षेत्र को, सोच विचार के क्षेत्र को हम लोग उस बदलाव की तरफ लेके जाएं जो हमारे राष्ट्र के, जो हमारे समाज और हमारे जन के सपने हैं और संकल्प हैं। I think one thing is definite, that we deserve to be number 1 in the committee of nations. हमको आत्मनिर्भर, विकसित राष्ट्र, सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनना है, और उसका जो आधार है वो शिक्षा, एजुकेशन ही है। पर ये जो हम यहाँ मंथन के लिए इकट्ठा हुए हैं कि किस प्रकार से ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम द सेकेंडरी एजुकेशन, ये प्रिंसिपल प्रोफाइल से, टू द हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, ये जो गैप है, ये जो ट्रांजिशन है, इसको किस प्रकार मैनेज करें सो दैट इट स्मूथ, इट इवॉल्व्स, ये ब्रह्मांड की कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ चले। और यूनिवर्सिटी के पश्चात जब एक यूथ सोसाइटी में जाता है, then his MARK, mark is tested by the market. मार्केट शब्द ही ऐसा है जिसमें पहला जो MARK है, they test your mark in the market. आपकी पैशन क्या है, आपका स्किल क्या है। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूं, ये वर्ड स्किल है क्या। मेरे को एक बार मौका मिला स्किल मिनिस्टर साहब को मिलने का, तो जैसे मैं उनके सामने में बैठा हुआ था, हमारा एक्चुअली आप रिप्रेजेंटिंग राष्ट्रीय सैनिक संस्था, और हम ये कहने गए थे कि जितने भी सोल्जर हैं उनके अंदर भी एक नेचुरल स्किल होता है, तो उस स्किल के बेसिस के ऊपर उनका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। मैंने मंत्री जी को कहा, सर अपने पीछे ये वर्ड को देखिए, स्किल। मैं एक फौजी हूं, मेरे को स्किल में किल ही नजर आ रहा है, KILL। क्या मैं मार्केट में जाकर, क्या मैं जीवन में जाकर एक ऐसा किल कर सकता हूं वेयर आई अर्न द मनी फॉर माई ओन सेल्फ। उसके लिए स्किल क्या होना चाहिए, पैशन क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए। उसके लिए नेचुरल प्रोपोगेशन फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन टू द हायर एजुकेशन एंड टू द मार्केट, असलियत जो है वो क्या होना चाहिए। ये जो कोविड महामारी है, इसने पूरा दुनिया को हिला दिया।
जो समझते थे अपने आप को बहुत बड़े देश हैं, ऐसा मेडिकल है, हेल्थ है, सब के सब ढह गए। सिर्फ एक राष्ट्र ने अपना नेशनल रेजिलियंस दिखाया, और वो है भारत। वो इसीलिए क्योंकि हमारी जो आधार है, जड़ें हैं, परंपराएं हैं, हमारे जो सभ्यता संस्कृति है, हमारा जो वेद पुराण, उन सब में सिखाया गया है दैट इज व्हाट विदस्टूड। एंड उसके बाद देखिए, ये नहीं कि एक काबिलियत आई, मानवता के स्वरूप के अंदर में पूरी दुनिया से वो साझा किया हमने। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोविड ने एक ट्रेलर दिखाया है, जहां पूरी दुनिया ढह गई थी, वहां हमारी जो राष्ट्रीय नेशनल रेजिलियंस है, दैट वाज ए सक्सेस। और मुझे ऐसा लगता है एक और ट्रेलर आया, जहां कोविड महामारी के कारण जो अर्थव्यवस्था जगह जगह के ऊपर में डिगमगाई, बट वी स्टूड, बिकॉज हमारा जो आधार है वो बिल्कुल अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आपने कहा, ये चरित्र बहुत गहरा होता है। ये चरित्र स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, वो कॉस्मिक एलिमेंट से बनता है। और मुझे लगता है कि हम सब के अंदर में जो डीएनए है, उसके अंदर में स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी, कॉस्मिकलिटी, वो ब्रह्मांड का जो अंश है, और चरित्र, परंपराएं। कोविड में पता लगा कि क्यों हम नमस्कार दोनों हाथ जोड़कर करते थे। तो हमारी जो गहराई है ना, वो अपने आप से बहुत ही एक ब्लेसिंग है। आज शिव जी ने 3 शब्द बहुत सुंदर कहे। एक उन्होंने फोकस कहा, एक मनी कहा। ऐसे ही, आई जस्ट वांट टू इन ए वेरी लाइट वे, हुआ ऐसे कि अंग्रेजों ने जब इंग्लिश बनाई, तो अंग्रेज लोग पहुंच गए, मेरे को कोट मत करना, मैं ऐसे बता रहा हूं, एक परिवार के अंदर में। तो अंग्रेज लोग गए भगवान के पास में, कहा प्रभु कल से हम आपको गॉड बोलेंगे। तो प्रभु ने बोला, प्रभु वाहिगुरु शिव जी ने बोला, मेरे को मालूम नहीं है आप मुझे कल से क्यों गॉड बोलेंगे, लेकिन ठीक है आपने डिसाइड किया है, लेकिन मेरी तरफ से इसके बाद में जितने भी आपके इंग्लिश के वर्ड बनेंगे और जिसमें ओ लाइक गॉड में आपने ओ वर्ड सेकंड लेटर डाला है, मेरी ब्लेसिंग्स होंगी इसके लिए। तो बाहर आ गए, तब पता लगा कि भगवान ने कहा क्या था। भगवान ने वोमेन ओ सेकंड लेटर, मतलब महिला, नारी, हमारी बेटियों को ओ सेकंड लेटर से ब्लेसिंग किया। आज पता लगा है वो मनी भी था उसमें, शिव जी ने बोला। आज पता लगा उसमें फोकस भी था। फिर ध्यान से सोचते हैं तो पता लगता है सब जो वर्ड जिसके अंदर में ओ सेकंड लेटर होता है, वो भगवान की ब्लेसिंग है। लव, हनी, मनी, गोड, नोट, पावर, सबके अंदर में वो होता है। आज मैं माननीय जेसी जैन साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना बड़ा परिवार एक खड़ा किया है। ये परिवार और इनकी सोच यहां रुकने वाली नहीं है। इनफैक्ट इस परिवार के सोच, विचार और धारणा से जो उत्पन्न होगा, उसका भारत को क्या इफेक्ट रिजल्ट होगा, वो समय ही देखेगा। ये जो वर्ड है ना, जेसी जैन जी का जैन वर्ड है, मेरे को तो इस वर्ड से बहुत प्यार है, JAIN। पता क्यों? क्योंकि मैं पूरा जिंदगी जय हिंद कहता रहा, और जैन में फर्स्ट 3 लेटर JAI है। जय हिंद का जय जैन वर्ड से आता है लगता है। दूसरा,
आज मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसी टेक्नोलॉजी है विच इज गोइंग टू अफेक्ट एवरी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ। और जैन में जे और एन को हटाने से एआई ही आता है सिर्फ। और आज शिव जी ने विन शब्द से इनका एक जो उत्पादन किया है, जैन वर्ड में लास्ट 2 लेटर हैं वो भी इन है। तो मुझे तो ये जो जैन वर्ड ही है इतना सुंदर लग रहा है। और मैं और बारीकी से देख रहा था, सुमिता जी में भी SUM के बाद में IT आ रहा है। बट आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट कि ये जो सोच थी कि हम एक ज्ञान विज्ञान का समागम करेंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किस प्रकार से सेकेंडरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन, उसका गैप, उसका ट्रांजिशन, और किस प्रकार से उस गैप और ट्रांजिशन की एनालिसिस की जाए और उसको मैनेज किया जाए। उसके पश्चात कार्य यही समाप्त नहीं होता। यूनिवर्सिटी के बाद में, हायर एजुकेशन के बाद में किस प्रकार राष्ट्र के जो सपने हैं, अभी जो पूरी दुनिया के अंदर में कोविड के बाद में डीकपलिंग हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का, लॉजिस्टिक्स का, हर एक चीज का मैन्युफैक्चरिंग दोस्त देखें। अभी उस डीकपलिंग के बाद में क्या रिकपलिंग होगा और किस प्रकार सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, एजुकेशन एंड ऑल द फेसेट्स ऑफ बीइंग ऑफ अ नेशन और ऑफ विश्व का किस प्रकार से वी गोट टू लीड, आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। मैं जिन्होंने भी आज हमने सम्मानित किया है, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे परिवार के बीच में से सम्मानित किया है। And I would like to compliment each one of you, the principals and the vice chancellors who've been felicitated today. And I'm definitely that on you, your shoulders is a responsibility, because others are going to come to you, that for what have you been awarded? And therefore, you have to now rise many notches up to take that leadership in your hand in the coming times. मुझे बहुत खुशी है कि आज इस परिवार से, आज इस समागम से, आज इस शिक्षक सम्मेलन से जो वाइब्रेशंस जाएंगे, जो सोच विचार बाहर जाएगा, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट क्या होगा आने वाले समय में, वो सोचकर ही एक बेहद खुशी हो रही है। आज सच कहूं तो आज बहुत खुशी की अनुभूति हो रही है। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। आई एम फीलिंग हैप्पी दैट वी हैव डिसाइडेड that there is a gap between secondary and higher education. We have decided there is a gap between university and post-university. What our youth will deliver. And once you decide, एक बार आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, then solution is definite. मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे पूरे राष्ट्र के, पूरे समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो विद्वान हैं, वो इकट्ठा बैठकर मंथन कर रहे हैं। डेफिनेटली इसका जो फल होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, अपने आप में एक बहुत ही हाई क्वालिटी का होगा। और इस एक्सेप्शनल समारोह हुआ है, पहले मैंने सुना नहीं कि ऐसा हुआ होगा। श्रेयांश मुझे कह रहे थे कि ये पहली बार है कि भारत में इस प्रकार का समारोह किया है। पहले तो मैं आपको इस सोच के लिए, लीड इन दिस सोच के लिए कॉम्प्लीमेंट करता हूं। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है बीच में किसी का ताली बजाने का दिल करता है तो जोर से बजाइए, घबराना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो हमारे समाज एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के अंदर में एक नई दिशा आएगी।
You have taken the responsibility onto yourself that we need to lead in this. मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि universities have got to take a lead in nurturing thinkers. ये जो 3 वर्ड मैंने कहे थे, सोच, विचार और धारणा, thought, idea and perception. We got to create thought leaders, ideas leaders, perception leaders. We have to foster job creation. We have to go in for a transformation. From job seekers, our youth has got to become a job creator. Please understand the difference. वो ताली मार रहे हैं तो जोर से ताली मारिए. आपकी ताली के अंदर में एक संकल्प है कि how do we change our perspective from being a seeker to creator. ये जो word है ना, creator, this comes from the family of positive, creative and dynamism. We have to change किस प्रकार से हम अपनी सोच विचार और धारणा करते हैं. ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि we integrate technology, education and jobs. So therefore, there's a requirement for all of us to sit together. We got to walk toward jointness, oneness and integration between the industry, academician, administrator, society itself. और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इस सोच की जो उपज हुई है वो रुड़की से हुई है. रुड़की अपने आप में अलग ही ब्लेस्ड क्षेत्र है. यहाँ पर टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एजुकेशन, यहाँ पर हर एक चीज अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल है. यहाँ की आईटी, यहाँ की फौज, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की एमएसएमई, यहाँ की सोच विचार, यहाँ के कॉलेज. I would like to compliment all in Roorkee for creating this thought out of which आज की सोच उत्पन्न हुई है. एक वर्ड है, क्योंकि आज हमने इन वर्ड का जो हमारे अंदर है, अंतरात्मा है, उसका इतना गुणगान किया है. I think we have to be inclusive. We have to take a comprehensive look at the entire perspective. सिर्फ आप प्रिंसिपल हैं और अपने स्कूल का ही ख्याल रख रहे हैं is not good enough. आप इस ब्रह्मांड के, आप इस कॉस्मोस के, आप इस विश्व के, आप इस यूनिवर्स के, आप इस मानवता के भी लीडर हैं. आपको एक सीड से लेकर अंत तक उस वृक्ष, उस संकल्प का ध्यान रखना है. There are 2 words. एक तो था संकल्प, that means resolve, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, निश्चय कर अपनी जीत करो, संकल्प. और दूसरा होता है समकल्प, that means एक बहुत बड़ा वृक्ष, जो भारत का वृक्ष है, जिसकी टहनी, जिसके पौधे चाहे वो अमेरिका में शिव खेरा के रूप में हो, लेकिन है वो हिस्सा भारत के संकल्प का ही. मैंने स्क्रिप्ट भी बनाया था. अभी तक तो मैंने सिर्फ आत्मा से बोला है, तो कुछ बोलना जरूरी है. इस स्क्रिप्ट में बहुत सुंदर एक चीज लिखी हुई है कि हमारा इतिहास क्या है. कोई भी देश हो, उसकी यूनिवर्सिटीज, उसके शिक्षण संस्थान, उसकी उपलब्धियों का सच्चा प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन होते हैं. What your school is, what your university is a reflection of what our nation is. और एक बहुत सुंदर कहा है, जिसके पास ज्ञान है वही सुखी है, वही बलवान है. It means the happiness, आनंद, ecstasy, bliss will only flow to them जिनके पास भी ज्ञान है. ताली मारिए तो जोर से मारिए ना. जब आप ताली मारते हैं ना, एक्चुअली आप अपना संकल्प को प्रदर्शित कर रहे हैं. सो जोर से, दिल से, आत्मा से, अगर आप बात में सहमत हैं तो फिर यू मस्ट एंजॉय दिस.
कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत के पास नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, तब भारत सुख और समृद्धि के शिखर पर था। जब भारत के पास तक्षशिला जैसे संस्थान थे, तब भारत का विज्ञान विश्व को गाइड करता था। भारत की समृद्ध शिक्षा व्यवस्था का भारत की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान था। आई हैव बीन टू तक्षशिला in Pakistan. When I was a major, I visited Pakistan for confidence building talks and I went to Takshila. 3 महीने तक पुस्तकें जलती रही, तब भी खत्म नहीं हुए। और हमारे नालंदा में 6 महीने किताबें जलती रही, तब भी खत्म नहीं हुई। हमारी जो गहराई है ना शिक्षा के क्षेत्र में, वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है। आज जरूरत है तो आत्मा के थ्रू हम उससे कैसे मिले, दैट इज अ चैलेंज फॉर ईच वन ऑफ अस। एक बहुत सुंदर लिखा है, आई मस्ट रीड इट। मेरा मानना है कि विश्वविद्यालयों का यह समय सही समय है। यही समय है, सही समय है। अगर अभी हमने अपने सोच में वो बदलाव, अपने सपनों को संकल्प के रूप में बदलेंगे, nobody can interfere into our achievement. एक और बहुत सुंदर लिखा है। आज दुनिया के लोग भारत को, भारत की पहचान को और भारत की संस्कृति को जानना चाहते हैं। There is a hunger, there is a desire, there is a quest to know what is India all about. हमारी सभ्यता, संस्कृति, वो जानना चाहते हैं कि इनकी जड़ें क्या है। वो जानना चाहते हैं हमारा ज्ञान, विज्ञान। वो जानना चाहते हैं कि इनका आयुर्वेद, योगा, मर्म चिकित्सा क्या है। वो जानना चाहते हैं कि इनकी सोच विचार, इनकी परंपराएं, इनकी जड़ें क्या है। So each one has got to be now taking on the responsibility to get connected to our fundamentals, our basic, our principles. Because the entire world is going to come here to you hereafter to know वो आप में वो क्या है। वो जो 3 तत्व है ना, डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी और वो कॉस्मोस का क्या तत्व है, वो ब्रह्मांड का क्या तत्व है। So therefore our responsibility as an Indian has risen up. आप तो प्रिंसिपल हैं, आप तो वाइस चांसलर से, आपकी जिम्मेवारी ये भी है कि आपके नीचे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर में इस सीड को, इस सोच को, इस थॉट, आइडिया और परसेप्शन को किस प्रकार आप अंकुर के रूप में डालते हैं। दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्षण बहुत ही सुंदर क्षण है, क्योंकि हमारे सामने 25 साल, ये अमृत काल, आपके जिम्मेवारी के नीचे हमारी अमृत पीढ़ी है। वो पीढ़ी है जो हमको at the rate 2047 and behind this at the rate is our mission, vision, सपने, संकल्प of सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र, विश्व गुरु, सेल्फ रिलायंस। We have challenges in front of us, but at the same time we have solutions in front of us. एक वर्ड में I would request you to please carry out a deeper research into it.
what should be the quality of education? It is not the quantum aspect I'm talking about. It's not the quantity, but I'm talking about what should be the quality. Relevance of the curriculum. अगर आप सोचते हैं कि कोई करिकुलम का हिस्सा irrelevant है, time has come to put it in the basket, then take the decision, have the courage. We need to empower our youth. Academic excellence, critical thinking, holistic development. One thing is definite. 1000 साल तक हमको मुगलों ने और अंग्रेजों ने लेबरर्स, सोल्जर्स, वर्कर्स के रूप में ही रखा. Can we make the next generation the committee of leaders, thinkers and innovators? ये तो बदलाव है. You have to take, आपकी आत्मा को ये संकल्प लेना पड़ेगा भारतवर्ष के लिए. From the thinking of a laborer, soldier, policeman, किस प्रकार आप लीडर्स, थिंकर्स और इनोवेटर्स बनाएंगे आप. बहुत सुंदर आज वर्ड कहा शिव जी ने. मैं शिव जी बोल के ना दोनों को इकट्ठा ही एड्रेस कर रहा हूं, उस शिव जी को भी और इस शिव जी को भी. फोकस, प्रायोरिटी, एकेडमिक एक्सीलेंस. आप इस क्षेत्र के माहिर हैं, so academic excellence is the focus. We need to have experienced faculty who are leaders themselves. We have to look at the holistic development. ना केवल 40 मिनट का वो लेक्चर, लेकिन holistic. State of art facilities we got to provide. और वे आउट क्या है? We got to have partnership, industry, administration, with the entire society. We have to go in for collaboration. We have to come out of the silos and connect to the entire space around. We have to focus on research and innovation. बहुत खुशी होती है कि इस बार जो इंटरिम बजट हुआ उसमें रिसर्च और इनोवेशन के लिए अलग ही पैसा तय किया गया. नहीं तो मुगलों और अंग्रेजों ने रिसर्च तो अपने पास ही रखी हुई थी. जोर से ताली मारी अगर मान ली. मुझे ऐसा लगता है कि ये जब मंथन चिंतन खत्म होगा तो हमारे आत्मा में, चेतना में, हमारी तीसरी आंख में कोई भी शक, शंका और सवाल नहीं होंगे. एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, क्वालिटी. क्योंकि अभी मेडियोक्रेसी, एवरेज से काम नहीं चलेगा. और एक बहुत सुंदर सी एक सोच है कि ये जो एक्चुअली आई गोट एक आदत सी है, हर एक इंग्लिश वर्ड को मैं पंजाबी इनोसेंस से देखता हूं. मुझे ऐसा लगता है वो शब्द खुद ही बोल रहा है. ये जो वर्ड स्टूडेंट है, इसमें मेरे को यू बहुत अच्छा लगता है, STU, लेकिन ज्यादा लगता है DENT, डेंट. ये स्टूडेंट्स हैं जो पूरे राष्ट्र समाज के ऊपर में आने वाले समय में डेंट करेंगे, एक प्रभाव छोड़ेंगे. और जब मैं ये टीचर वर्ड को देखता हूं तो T और ER को जब मैं निकालता हूं तो अपने आप से ये वर्ड टीचर मेरे को कहता है, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच ऑफ द चिल्ड्रन. सबके लिए, ये नहीं कि सिर्फ मॉनिटर या 2-3 बंदों का ही केयर कर रहा है. He's got to be responsible for each one of your student. और जब मैं यूनिवर्सिटी को देखता हूं तो इसमें मेरे को 2 वर्ड बड़े प्यारे लगते हैं. वो है यू और आई.
यूनी में यू और आई कहने का मतलब है कि किस प्रकार यू और आई उन सबको मिलाता है और पूरे यूनिवर्स के लिए उनको तैयार करता है, पूरे विश्व के लिए तैयार करता है, पूरी मानवता के लिए तैयार करता है। आज सचमुच न जाने इस स्थान, इस क्षण, इस परिवार के साथ क्या अलग है, लेकिन मेरे को तो बहुत ही एक अलग ही आज एक आनंद आया है। और मुझे ऐसा लगा है कि आज जब से मैं आया हूं, तब से जिन्होंने भी बोला है, आत्मा के स्तर पर बोला है और ब्रह्मांड को, भारत को, मानवता को अगले स्तर पर ले जाने के लिए। अगर मेरी वाइफ यहां बैठी होती ना, तो उसने पक्का एक बात बोलना था, होड़ बात करो। अंत में जय हिंद, नमस्कार और प्रणाम। This was like, wow, so much energy, isn't it? महामहिम की जो ओजस्वी वाणी है, उसके माध्यम से आपका जो विशाल ज्ञान भंडार है, उसकी एक छोटी सी झलक आज हम सब ने देखी और उसको देखकर हम सभी अभिभूत हैं, आनंदित हैं, आह्लादित हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करूंगी स्टेज पर हमारे आदरणीय चांसलर सर श्री जेसी जैन जी को और हमारे प्रो चांसलर श्री श्रेयांश जैन जी को, जो एक मेमेंटो प्रेजेंट करेंगे महामहिम राज्यपाल जी को। अंदाजों आप लोग भी तालियों में वही एनर्जी दिखाइए जो महामहिम ने अभी अपने भाषण में दिखाई। मैं सभी अतिथि गणों से अनुरोध करूंगी कि वो खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। इधर आ जाओ, इधर भैया, इधर चले जाओ ना, आगे चले जाओ, आप आगे जाओ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।
कहाँ गया? I now request all our esteemed guests to settle down. We are going to start our panel discussion part 2. I request everyone to please settle down. Respected educators, a warm welcome to all of you in the second panel discussion, which is on the topic skill development for future careers. For this, I would like to call upon our moderator, Srimati Naina Yadav ji. नैना जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले 16 साल से वो टेलीविज़न न्यूज़ में अपना एक बड़ा नाम बना चुकी हैं। कई बड़े मीडिया संस्थानों में वो काम कर चुकी हैं, जैसे नेटवर्क 18, जी और टाइम्स ग्रुप में भी वो काम कर चुकी हैं। उनका बड़ा अनुभव है। वो सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ी रही हैं। I would now like to welcome Ms. Naina ji to the stage. Welcome, Naina. And I now welcome our panelists, Professor Dr. Ranjit Singh ji, Vice Chancellor, Shobhit University, Gango, Uttar Pradesh. As I announce the names of all panelists, I request them to come to the stage and take their seats. Our second panelist, Shri Ankush Mittal ji, Adjunct Professor, IIT Mandi, Himachal Pradesh. Professor Dr. Ajay Kumar Mishra ji, Vice Chancellor, Sikkim Skill University, Sikkim. Professor Dr. Sandeep Mishra ji, Vice Chancellor, NIMS University, Jaipur, Rajasthan. Professor Dr. Pranveer Singh Satwat ji, Pro Vice Chancellor, Assam Downtown University, Guwahati. Professor Dr. S.B. Sharma ji, Vice Chancellor, Millennium University from Africa. Professor Dr. Vikas Singh ji, Vice Chancellor, Gita University, Panipat. And Shri Pankaj Mittal ji, Pro Vice Chancellor, Global University. I now request Naina ji to take over. थैंक यू सो मच समिष्ठा जी। और यहाँ पर मौजूद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर आसीन मेरे साथ में जो वरिष्ठ जन हैं, आज बेहद खास मौका है और हमने जो सेशंस अभी तक देखे हैं, सुने हैं, वो इतने ज़्यादा एनर्जेटिक रहे हैं, चाहे बात वो शिव खेरा जी के हो या फिर महामहिम जी के जो हमने खास बातें सुनी, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और ये ज़रूर बता देती है कि आज का ये जो मौका है कोर यूनिवर्सिटी के माध्यम से इस ज्ञान समागम का, वो इतना बेहद खास उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा निर्णायक ज़रूर होगा। मैं अपने इस पैनल की तरफ, डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ूँ। मैं चाहूँगी एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ में प्लीज़ हमारा ये जो टॉपिक है और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनका वेलकम करें। यहाँ पर सभी लोग पीछे भी अपनी तालियों से ये बताइए कि आप लोग हैं, अभी एक्टिव हैं। इतना एनर्जेटिक सेशन आप लोगों ने लिया है। नैना, जस्ट एक छोटी सी अनाउंसमेंट मुझे करनी है। मैं सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध करूंगी, फोटोग्राफ्स का सेशन इस सेशन के बाद कर लीजिएगा। प्लीज़ टेक योर सीट्स। Our panelists are there on the stage.
देखिए, हम बिल्कुल जानते हैं हमारे बीच में बहुत खास मेहमान हैं, शिव खेड़ा जी हैं, और हर कोई चाहता है उनके साथ में तस्वीर खिंचवाना, हर कोई चाहता है उनको सुनना, लेकिन एक बहुत खास मौका है, प्लीज उसका साक्षी और उसका साथ दीजिए। आप सभी भी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। आज हमारे साथ में यहाँ पर क्योंकि बहुत खास मेहमान हैं, चाहे बात अलग अलग देश भर के अलग अलग कोनों से आए यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हो या फिर स्कूल्स के प्रिंसिपल। देखिए, स्किल डेवलपमेंट का ये सेशन है क्योंकि वक्त की बहुत ज़्यादा हमारे साथ में कई पाबंदियां हैं, तो हमें उन तमाम चुनौतियों को देखते हुए डिस्कशन को मैं आगे ज़रूर बढ़ाऊंगी, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जिसमें चर्चा करना अपने आप में बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है। मैं चाहूँगी इस पूरे जो डिस्कशन है उसकी शुरुआत अजय कुमार मिश्रा जी से ही करने की, क्योंकि आप सिक्किम स्किल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। सर, अभी तक हम बात कर रहे हैं खासतौर से जॉब सीकर, जॉब क्रिएटर की। मैं सबसे पहले आप ही से जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि आखिर आज के समय में जो एजुकेशन पैटर्न है उसमें बेसिक, क्योंकि स्किल अपने आप में बहुत वास्ट, बहुत डिफरेंट और बहुत प्रैक्टिकल मोड पर आ जाता है, स्किल डेवलपमेंट करिकुलम हिस्सा में कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस समय? या गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि आपने क्वेश्चन करा, लेट मी एक्सप्लेन। स्किल डेवलपमेंट एब्सोल्युटली, अगर हम देखते हैं जॉब प्रोस्पेक्टिव की, हर आदमी सोचता है आज के समय में कि जॉब चाहिए हमें, ठीक है। करिकुलम जो आज NEP 2020 आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको आगे इन्हांस करने की बात करी और हम इन्हांस भी कर रहे हैं। और स्किल डेवलपमेंट इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बेसिकली अगर हम कॉन्सेप्ट में लाएं कि जॉब हमें मिलेगी कैसे, तो जॉब तो मिलेगी ऐसे कि जब हमारे पास कुछ नई स्किल होगी तभी। That's why skill development are right now need-worthy thing, and we are enhancing the thing in our universities in that way. Ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और मुझे लगता है कि जब बार बार इसी पर जोर है, जॉब सीकर, जॉब क्रिएटर। मैं चाहूँगी अगला सवाल रंजीत सिंह जी से। रंजीत जी, ज़रा इस बात को आप समझाने की कोशिश कीजिए। बेसिकली कहा जाता है कि एसेंशियल स्किल्स जो हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर करियर्स के लिए। ऐसा आपको आखिर क्या लगता है आने वाले वक्त को लेकर कि ये कितना पैटर्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि इस चीज़ को आगे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में वो आगे अपने रास्तों के लिए बहुत आसान हो जाए? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अभी जो आपने बात की, सर मैं चाहूँगी, माफ़ी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इस ऑडिटोरियम में, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आप लोग सभी अलग अलग क्षेत्र के डिग्निटरीज हैं। मैं चाहूँगी आप लोग प्लीज़ स्थान ग्रहण करें और इस पूरे पैनल को सुगम तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं। रंजीत जी, सॉरी। धन्यवाद। दर्शकों को रोकना बड़ा मुश्किल काम होता है। एस्टीम्ड पैनलिस्ट एंड लर्न ऑडियंस, जो सवाल, जो ये थीम है इस पैनल डिस्कशन का, स्किल्स फॉर फ्यूचर, तो मैं सबसे पहले तो यही शुरू करना चाहूँगा कि जो शिव खेड़ा जी ने कहा था कि सबसे ज़रूरी है चरित्र। और मैंने एक चीज़ नोट की कि कोर यूनिवर्सिटी का अगर आप लोगों देखेंगे उसमें भी ये लिखा हुआ है कि चरित्र ही वास्तविक धर्म है। तो आज हम स्किल्स की बात करें तो थिंकिंग स्किल्स हैं, पर्सनलाइज स्किल्स हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं और टेक्निकल स्किल्स हैं। बहुत सारी स्किल्स जो हैं वो हमारे परिवार से, संस्कार से आती हैं, जिनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं, एम्पैथी कहें, इमोशनल इंटेलिजेंस कहें। इसके अलावा जो इस वक्त की ज़रूरत है, अगर हम इस तीसरे दशक की बात करें 21st सेंचुरी के, तो टेक्निकल स्किल, जबकि डिसरप्टिंग टेक्नोलॉजी हर तरह से अपना रोल प्ले कर रही है, चाहे पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका करियर ग्रोथ हो, तो उन सब स्किल को सीखना। डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं हम, डाटा लिटरेसी की, डाटा एनालिटिक्स की और डिसरप्टिंग टेक्नोलॉजी की। यहाँ मैं कहना चाहूँगा, बहुत कम लोग बचे हैं, स्कूल प्रिंसिपल भी यहाँ पे हैं। हम हायर एजुकेशन में जो रॉ मटेरियल आता है वो स्कूल से आता है, और हम ये उम्मीद करते हैं, आप लोग बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं कि वो सारी स्किल्स जो लाइफ स्किल्स हैं वो बच्चा वहीं से सीख के आता है, परिवार और स्कूल से। तो आपका रोल और महत्वपूर्ण हो जाता है। फ्यूचर के लिए ये ज़रूरी है कि लाइफ स्किल्स के साथ साथ टेक्निकल स्किल भी हम सीखें, अच्छे इंसान बने और देश और विश्व को आगे बढ़ें। क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है सर। जैसा कि बार बार अभी शिव खेड़ा जी ने भी वही उस चीज़ को मेंशन किया कि हमेशा कहा जाता है कि भाई आपका जो व्यक्तित्व है वो सिर्फ आपको एक अच्छे स्टूडेंट नहीं, एक अच्छे देश की बेहतर आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। लेकिन अंकुश जी,
बार बार ये बात कही जाती है कि हमेशा जब वोकेशनल ट्रेनिंग्स की बात होती है, बार बार ये भी कहा जाता है कि हम जब आगे बढ़ते हैं तो हर एक स्टूडेंट के लिए खासतौर से उसके एजुकेशन सिस्टम में ही इस तरह के पैटर्न्स होना बहुत ज़रूरी है। वोकेशनल ट्रेनिंग आखिर आज के